से ही दूर इससे चलता कर दिया. Look at how beautifully he's lined it up. It's in there and taken. Up and over. दिल का शॉट खेला, लेट कट किया माल सदाकत में और ये सनसनीखेज शॉट खेला मिड विकेट के ऊपर से. A very well played knock this, and very important in the chase as well. And straight, another one down. UMT Marpol have registered their third win. Caressing it and getting the result. And that brings up his 50. Wonderful inning. Starts off, connects well. 4 रन्स के लिए खेला और अपनी पहली 50 मुकम्मल की उन्होंने इस टूर्नामेंट. It sounded beautiful. That is the fastest 50 of the tournament from Pushdil Shah. Again, just hitting the deck hard. Went quicker, went away even quickly. As he brings up his half century with that excellent push shot. And taken, and Nurpur line grab second victory in a row. A very good morning from Rawalpindi Cricket Stadium, where Barrier Town Champions Cup T20 is underway, and we're all set for match number 9, where Allied Bank Stallions are taking on Engro Dolphins. It's going to be a good contest. A lot of action today. We've got huge names in both lineups. Imran Mumtaz, Shoaib Malik, Fahim Ashraf. A lot of people, a lot of stars to be looking for. In this one, Fahim Ashraf would be looking to register first win. Engro Dolphins still struggling. Ihsanullah, can't wait to see him in action, and he's in a sublime form. Saeedzada Farhan, an important role he has to play. Well, yesterday's result has prompted these standings on the points table. UMT Marpol's right on the top. 3 out of 3 wins for them. Nurpur Lions just climbing one position up. They won their match. Allied Bank Stallions on number 3. Lake City Panthers and Engro Dolphins yet to get off the mark with a win. We've got some very balanced sides here. Umar Amin is one of the veterans. I've seen a lot of potential here. And I've got Shah Faisal alongside me. Good morning, Marina. Good morning, all. Huge game for Dolphins. The mentor, Sarfraz Ahmed, would have had a good talk to the team. Not much time to think after yesterday's loss. And this man has already created some mystery. Hussain Talat has been the in-form batter. Yasir Khan has got starts but not been able to convert them into any big performances. Yeah, it's chilly morning there, but one man to watch out is definitely Saeedzada Farhan. He did struggle in initial games, but yesterday he showed some discipline in the batting, scoring 54 of just 42 deliveries, 3 4s and 3 6s. And he's the one guy Engro Dolphins would want to click and go deeper. The opposition, you need to keep an eye on him because he can be destructive, he can be dismissive, and he can win games on any given day. His start to the tournament was slow, but yesterday he came good and gradually looked more and more fluent and destructive as the innings progressed. Engro Dolphins will be looking at him to provide him that fantastic start. We'll have to see what can be done. Sarfraz will be in the spotlight as well. Well, this square has provided a very decent amount of action to us, but what can today's pitch
give us. Shah Faisal, you were there earlier. Let's hear from you. It's a salubrious morning here in Rawalpindi. The sun is out. The temperature is only 12 degrees at the moment and the humidity 43. It's going to go up to 17 degrees. So it'll be pretty pleasant throughout the day. And good thing is the sun is out. Talking about the actual surface, pitch number 8, it hasn't been used before in this tournament. If you have a closer look, it's got plenty of cracks on it. There's a little bit of grass as well. But the reason is because it's so cold and it stays cold overnight. It is not baking up. These pitches, they don't get baked up even when the sun is out throughout the day, and plenty of traffic on it as well. It's still pretty hard, but the way to go for the bowlers in the last couple of days have been into the pitch and taking pace off with a slightly older ball. Run making and stroke making have been difficult. Slow bowlers have come into the fore because of this, and I don't see it being any different today. Seems like a very decent surface. Into the pitch is the message from Shah Faisal, especially for the bowlers. It's got good pace, especially for the batters as well. There are runs and everything for every type of bowler. It's pretty hard, very nicely rolled. The only problem the curators are having is it doesn't get any warmer. But generally this wicket is very hard and compact, will be good for batting. Earlier on, a little bit of moisture, 11 o'clock start. The team batting first will have to watch out for that. Well, both teams coming back from defeat. This is going to be a good contest. Let's see what the captains have to say with Ali Yunus at toss. It's nice and bright here in Rawalpindi for match number 9 of Berry Town T20 Champions Cup. It's Engro Dolphins taking on ABL Stallions, and we're all set for the toss. The two captains, Fahim Ashraf, Mohammad Haris and Iftikhar Ahmed, the match referee, all in readiness. Who has got the coin? Fahim Ashraf is going to give it a spin. Tail. Tails is the call. It's a head. Fahim Ashraf has won the toss. क्या करेंगे? हाँ बॉलिंग करेंगे जी. कल आपने चेंज किया था, आप टेक्निकल की वजह से आज कुछ कंडीशंस का रोल लग रहा है? जी बिल्कुल, आज थोड़ी सी कंडीशन ऐसी है, मैच थोड़ा अर्ली स्टार्ट है, इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि जो पिच में हेल्प मिल रही है उसको ले सकें. अभी तक डॉल्फिन्स ने कोई मैच जीता नहीं है, लगता है शार्क्स बनना पड़ेगा डॉल्फिन्स को. देखें जी, डॉल्फिन ने अभी मैच नहीं जीता, लेकिन अभी टूर्नामेंट आधा भी नहीं हुआ, तो कोशिश होगी कि आज की जो मैच जीतें और इस विन को आगे कंटिन्यू करें. तो क्या कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी आपको विनिंग मोमेंटम हासिल करने के लिए? बिल्कुल, चेंजिंग हमने की भी है और हमें अपने जो हम गेम प्लान है उसमें भी चेंजिंग करनी पड़ेगी. जो हम मिस्टेक कर रहे हैं कोशिश करें कि उसको उन मिस्टेक को बार बार ना दोहराएं. और टीम न्यूज़? टीम बिल्कुल हमारे पास एहसानुल्लाह वापस आए हैं, एहसानुल्लाह और हुरैरा वापस आए हैं. ऑल द बेस्ट फॉर मशरफ. थैंक यू वेरी मच. Haris, हैप्पी विद बैटिंग फर्स्ट या बॉल ही करते? नहीं जी, बिल्कुल हैप्पी है, हम बैटिंग ही करते हैं. आज विकेट थोड़ा सा बहुत बेहतर लग रहा है मुझे. इंशाल्लाह आज रनों वाली विकेट आई है. कल आप मैच हार गए थे, तो क्या कुछ सीख के आ जाएं इस मैच में? वेल, इतना टाइम तो नहीं मिला सीखने को, लेकिन देखते हैं जो गलतियाँ की है उसमें आप इतना नहीं कह सकते क्योंकि छोटे मार्जिन से हम हारे थे. लेकिन अगेन हर किसी को पता है अपनी गलतियों का और उनको एहसास भी है. इंशाल्लाह आज वो नहीं दोहराएंगे. फ्रेश पिच है, कितना टोटल आप लगाने का सोच रहे हैं? Anything 170 plus will be a good score here इंशाल्लाह. टीम चेंजेस? एक चेंज है, मेहरान मुमताज़ खेल रहे हैं ताहिर हुसैन की जगह. All the best, Haris. Thank you. Right, the news from the toss is that Engro Dolphins has won the toss and decided to bowl first. Engro Dolphins winning the toss and no surprise has opted to field. Let's have a look what the lineups are as the umpires are taking the field. Khalid Mahmood Senior and Mohammad Asif. All smiles there, ready for the action, and so are we. Huddle there. Here's the lineup, and Shah Faisal will take us through. Well, good to see Mehran Mumtaz back in the lineup. Teams realizing the role of spin increasing as the tournament progresses here at the Pindi Stadium. He's replacing the tall left armer Tahir Hussain. Just the one change. Very formidable top order. Santalat has been in great form throughout the tournament. Master Dakat showing plenty of promise. Can't rule out Shoaib Malik. Yeah, experience always has a higher level in value when it comes to cricket or to any other sport. And the openers, Maaz and Yasir, both are attacking players.
And whenever there's an opportunity provided, we saw what both can do, especially Mars the other day. It was brilliant in taking the action on. Engro Dolphins with 2 changes. Herrera gets another go, and it's good to see Asanullah, the tall fast bowler, back in the lineup. It's actually getting his first chance. Out goes Mohammad Suleiman and Saqib. Ramiz Jr. is there. Samin Gol, Salman Ishad and Asanullah. It seems like a really good bowling attack, Shafaz. Yeah, the most exciting part is to see Asanullah, tall tearaway fast bowler who went through quite a difficult time with his injury, which is well documented. His arrival at the domestic scene and then international scene really caused waves. It'll be good to see him in action. Not immediately, probably. Maaz Sadakat was in very good touch yesterday, and when he was in, it felt that the Allied Bank Stallions would go on and win the match. He scored his maiden half century yesterday, just 19 years of age, and a very good future ahead of him. He's another one to watch. Yasir Khan. He's a stylish batter, especially in T20. Once he gets settled in, he can tear you apart. Highest of 107. Scored 100, 350s against his name, averaging 24. It seems like a good surface. And this has become a sort of regime for every batter to come in and do the initial push-ups. Samin Gul, formidable with the new ball, in longer format in particular, but 54 games rather under his belt in this format already. I think it's all in readiness. Talking about Yasir, he does do that before every game, just flexes his muscles, ready from the get-go. Khalid Mahmood Sr. has called for play, and the action is about to begin. Just a one slip in, which is pretty wide, wider than the regulation for a slip. Ready, guys? Yasir to face the first delivery. They've got a conducive condition, especially for the fast bowlers. Here we go now. First delivery of the morning. Oh, right on target. Just slightly hanging in the crease, Yasir on that occasion. Good length to start off. Samin's got the natural movement into the right-hander. So a hint of movement. It's very striking that we haven't seen a lot of swing in this tournament. Khalid Mahmood Sr. He's standing at the pavilion end where Samin Gul is bowling from, and Muhammad Asif will be officiating from the media center end. Oh, some movement there from Samin Gul. Starting from way outside off stump, nailing back. And Yasir is just a little bit conscious in playing that shot. It's really the first signs of some swing in the air. We haven't seen much. Samin hitting Yasir probably high. Cramped him for space though. Yes, Samin would be encouraged. Even Fahim Ashraf as well. New ball, it's important to capitalize. The power play is important for both the bowling side and batting side. Again, swing. He's probably straying down the leg. Too much movement. He's doing too much. But this is good bowling. More evidence of that swing. And Yasir is in trouble. That ball is hooping along. Yasir probably feeling the pinch. It's pretty cold out there. Just hitting on the flap on the pad, which doesn't have as much padding as what the pads have below the knee roll. Yeah, just a small word with Mars. Might try and stand out of the crease. Change in field, 45 comes in place, and out goes the short square leg now at the boundary. Got two protectors, deep third and deep square leg. Oh, picked that up.
Hasn't timed it. The fielder won't get there. First boundary, they're up and running. Yasir with the boundary. He did check his stroke. He didn't go through with it. It was slightly back of a length. I think it was interesting what Harris said on the toss, that he feels this pitch is very good. With the new ball at least, it did come on. Earlier we've seen this sort of deliveries sticking in the pitch and getting straight up in the air, staying inside the ring. Yasir will get a few runs. I wouldn't mind that slip coming out and being at short mid-wicket. With the amount of swing Samin is getting, he'll probably keep that line and length. Again, wild swing, good length, good line. Yeah, with this kind of movement, I would rather take out the cover fielder, show the batter the gap, and let him go for it, get tempted, play against the tide, create the gap, and still bring that fielder across to mid-wicket. But this is good bowling from Samin Gul. He's hitting good areas, he's getting movement, and Yasir, like always is the case, gets a bit itchy when he doesn't find the middle of the bat. Yeah, Yasir rather fancies that shorter length. He's quite comfortable off the back foot. Slip coming out and going into short mid-wicket area. Well, Rana Fahim Ashraf, in sync with what you're thinking, Marina. Oh, brilliant bowling. Yasir is out of clues here. Samin hitting the right line and length, and a good start for Engro Dolphins. Just a boundary to concede. 1 gone, 4 without loss. Qasim Akram, well, there are the changes strengthening their spin department. Allied by Stallions, Mehran Mumtaz coming in, the left armour. Herrera and Ihsanullah walks in for Engro Dolphins. This is new. Qasim Akram sharing the new ball with Samin Gul. It's very interesting. Holding Ihsanullah back. Obviously, he's making a comeback after a long layoff. They want to ease him into the action. Just with given and welcomed by Mars with the boundary. Qasim Akram, 2 outside off stump. Playing the matchup, off spinner against the left-hander. Too much width from Qasim Akram. And Mas Sadakat, who's been in good form, just latches onto it, square drives it. More reinforcement now onto the offside field. Just the 3 fielders on the onside, 6 on the off. Slams it again, but straight to the fielder. It's a good ploy against left-hander. Qasim has been in a decent nick, picking up wickets. But he just needs to correct his line. He's too wide. Slip is there. Force Mars to play with a straighter bat. Just shuffling across the offside. Opening up that leg side area. Picks up a single. Quicker delivery, just came in with the arm. Kind of feel he had for Mars. He left himself with very little options of bowling straight. But now he'll be bowling to right-handed Yasir. What kind of field he's looking to get? 2 sweepers, both of them on the onside. 4 fielders on the off side. He's moving another one on there. So,
Oh no, not quite. Not sure what they want to do. Eventually, it's a 5-4 field, 5 on the offside. Yeah, it's not going to turn. The new ball will skid on. Probably will keep it around that fourth or off stump area. Easy pickings there for Yasir. Qasim has played an important role, picked up 5 wickets till now. Economy of 4.5. A handy all-rounder to have in your side. Yesterday, he bowled a good spell in the middle of the innings, 3 for 21, his return of 4 overs, when his team was conceding quite a big total. Few people are in already. It's very cold, a bit hazy this morning in Rawalpindi. That's good bowling, Qasim. He's trying to trap Maz. Even yesterday, he did take a little bit of time initially, Maz, then unleashed himself. So probably the idea is to keep things tighter around him. Oh, picked up nicely, behind square. No one protecting that boundary. Freebie for Maz, and he takes it for a maximum. 2 overs, 16 for none. Well, they're up and running. This one a loose delivery. Slow full toss. Down on one knee. And the bottom hand coming into play to place it behind square. Had ample time to do that. Samin Gul to continue. He must be encouraged to see the movement he has. Just needs to be consistent. Yeah, what a brilliant over it was from Samin Gul to start off things. He got prodigious movement in the air. Yasir was all at sea. No room whatsoever, but the movement really wreaked havoc. This one, a streaky boundary, but then a couple of beauties. Big gap created, but the last one going over the top of the stumps. That is a great start. Now he will have to bowl to the left-hander. That'll be interesting to see if he can get that kind of movement against the left-hander. Continuing with just a single slip. It's wide-ish though. Deep third. Now got deep fine leg. He's a natural in-swing bowler. Starts off onto the pads. Clipped nicely. We'll be looking for the second one. And easily done. It's always the risk when you see the ball moving around so much. You want to start it from leg stump and want to bowl the magic ball, as they call it. Pitch, leg, and hit off. But when you do that, sometimes it doesn't do as much movement. Have a look. Just went straight through, and Maz is looking very proactive. He won't allow bowlers to settle. Again on to the pads. Not a good line, especially if he's getting the swings. I mean, against the left-hander, he needs to pitch it around that middle and off stump. To force him to come and commit to his front foot, force him into the drive. He's got to slip in place. All of a sudden, that movement has disappeared. It's just funny, one of those things in cricket where you feel like, what happened in 3 or 4 minutes time, that when he was getting the ball to hoop around, and nothing is happening to the left-hander. Slightly on a shorter length.
And probably we've seen that the right armers are more conscious bowling to the left-handers, just not trying to sway down the leg, and they have that thing in mind that I need to keep a tighter length, and they try and come and hit the deck hard rather than just giving a little bit of air, what Samin was doing to the right-hander. In recent times, we've seen a lot of the bowlers who are able to take the ball away from the left-handers. They like that round the wicket angle, because angle the ball in and then straighten it down. Samin so far hasn't decided to do that. Square leg has gone back, fine leg has come up in the ring. Smashed hard in front of square, and that's good fielding, really good fielding, good commitment. Tahir Beg on that occasion saving a certain boundary. Like I said, Mars is very proactive. Even towards the end of the last over, when he hit Qasim for 6, he went right across his stumps to create something out of nothing, put the bowlers under pressure. Here as well, walking right across his stumps. This is good effort in the deep. This outfield is very fast, deceptively fast for the outfielders. More changes in the field. Slip has been taken out. Yeah, I think Fahim Ashraf has had a word with Samin. He's not that comfortable pitching it up, going across. Protection given. Tighter line this occasion. Dot to end the over. 3 overs gone. Allied Bank Stallions 21 without loss. Good to see the crowd coming in early morning. It's chilly, but the commitment to watch their favorite stars in action, it never fades away. Skipper himself, Fahim Ashraf, has taken things in his own hands. Steady partnership, 21 of just 18 deliveries, but he's got experience. And he's also another one who can utilize these conditions. That experiment with Qasim just lasted for 1 over. Trying to mix it up inside the power play. Straight to the fielder, Yasir. He prefers staying off the back foot. Yasir has looked good in this tournament, but he must be disappointed with his returns because he hasn't been able to convert good starts. Even in the last game, he looked pretty good. But then, as a batter, when you're in, you want to make a bigger impact. Good thing is the games come thick and fast, so you're able to think quickly and correct your mistakes quickly without thinking too much about it. Tighter line and good single. Slip was taken out, placed at short mid-wicket. The idea for both Yasir and Maz is to keep the line straighter. Don't give any room to either of them. That idea of early wickets in an 11 o'clock start game, Fahim has gone too defensive, especially for Yasir, who hasn't hit a shot in anger just yet. Maz has been proactive, but to have so many defensive fielders for Yasir. Just nudged it around to third. Well, it'll be very interesting to see when Ahsanullah will come to ball. Still that right arm and elbow is heavily strapped, but we've seen him from day one of this tournament, bowling in the pre-game routines. He's been monitored very, very closely, and today finally the day has come where he's been given some game time. Yeah, even with the conditions, it's got bounce and pace.
Off the back foot yet again from Yasser, unable to pace the gap. Just scored 7 of 10. Probably one thing that is holding Fahim Ashraf back from using Ahsanullah. Probably he would want to bring him outside the power play with a little bit more protection. Let him bowl with a slightly older ball as well, where he can get better control, since he hasn't played for such a long time. It's a wise thing to do. Just give some confidence to your bowler. Back of the mind, he knows that he has protection bowling out of the power play. He can test himself, his line and length and his body. Straight to the fielder. It's good bowling, keeping things tight here. Allied Bank Stallions, they need to work harder. He must be very nervous though, Ahsanullah. You must be a bit anxious as well, how the elbow will go. He's gone through so much. That's the life of a professional athlete. You have to go through these phases. And they do need resilience, character. He's got a smile on his face. That's a good sign. Yeah, always eager to make a comeback. As you mentioned, we've seen him bowling in the warm-ups, so won't be a problem. But yes, match practice, that's something he is definitely lacking. Wide swing, fetched it from outside off stump just for a single. A risky shot to play. 1 to end the over. 4 overs gone. Allied Bank Stallions 24 without loss. यासिर अली को अभी तक खामोश रखा हुआ है यहाँ पर डॉल्फिन्स के बॉलर्स हैं, उनके लिए कामयाबी नागुज़ीर है। ये आखिरी मैच है उनका इस पहले मरहले में, और पहले तीनों मैचेस में इनको बुरी तरह शिकस्त हो गई थी, इसलिए आज टीम में कुछ तब्दीलियां भी की गई हैं। सामीन गुल ये अच्छा स्पेल कर रहे हैं, इन्हें मदद मिल रही है यहाँ पर हवा में ऑफ द विकेट भी, इसलिए इनसे तीसरा ओवर भी यहाँ कराया जा रहा है, जो कि बुरी सोच नहीं। एहसानुल्लाह की भी टीम में वापसी हुई, तो आज जतन ज्यादा हो रहे हैं डॉल्फिन्स की जानिब से। अली जी और शायद इस चीज़ की ज़रूरत भी है, थोड़ा डेस्परेट मेजर्स की ज़रूरत है। एहसानुल्लाह को लेके आए इसी वजह से। कल हमने बात की थी कि वो एक्स फैक्टर मिसिंग है इनकी टीम में, तो शायद एहसानुल्लाह वो एक्स फैक्टर है जिसकी इनकी तलाश है। और जब आप 3 मैचेस हार जाते हैं लगातार, तो फिर शायद वो हालात ऐसे बन जाते हैं कि आपको डेस्परेट मेजर्स लेने पड़ते हैं। यहाँ पे आगाज़ अच्छा है, बांध के रखा हुआ दोनों बैटर्स को। लेग साइड में खेला, लेकिन वहां पर है निगहबानी, एक ही रन मैसर आएगा। यासिर जो हैं पिछले कदम पर अच्छा खेलते हैं। रमीज जूनियर, कल ज़्यादा मौका मिला नहीं था इन्हें बॉलिंग का। और ये एक अच्छी खबर है कि बहरिया टाउन प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये अब ग्लोबल हो गए हैं। दुबई साउथ में एक वर्ल्ड क्लास गेटेड कम्युनिटी बनाई गई है। विकेट की तलाश होगी क्योंकि अभी मोहतात खेल रहे हैं, लेकिन इनके पास वो फायर पावर है। हारिस के आने में हुसैन तलत या मोहसिन तैमूर की बात करें, शोएब मलिक बीच में स्टेबिलिटी देते हैं। गेंद जो है तवक्को के मुताबिक उछल कर नहीं आई, अक्रॉस द लाइन भी चले गए थे। माज सदाकत, कल इन्होंने अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया, लेकिन आखिर में इनकी जो मेहनत थी उस पर मिडिल ऑर्डर ने बुरी तरह पानी फेर दिया था। इससे मलाल तो रहेगा, और ज़्यादा खुशी होती इस उम्र में अगर वो इनिंग्स मैच विनिंग हो जाती है। अली
यार शायद इस इनिंग के बाद इनको कुछ एहसास भी हुआ होगा कि विकेट नहीं गंवानी है, मैच खुद फिनिश करना है, अपने ऊपर लेना है, किसी पे नहीं छोड़ना है। जब आप वेल सेट हैं, 80 के करीब हैं, तो फिर बनता नहीं है कि आप विकेट थ्रो करें, आपको मैच फिनिश करना चाहिए, ये आदत डालनी होगी। और उठा खेला मिड ऑन के ऊपर से और गेंद चली गई, जी हाँ, ऑल द वे बाउंड्री के बाहर। खालिद महमूद सीनियर, उनके दोनों हाथ हरकत में आ गए, काफी देर से ये कोशिश कर रहे थे यही शॉट खेलने की, इस बार उनका वार खाली नहीं गया। नहीं, ये पहली अटेम्प्ट है बड़ी शॉट की और कामयाबी से अचीव भी किया है। थोड़ा अपने आप को रूम दिया, अपने वो एक्सटेंशन ऑफ द आर्म जिसे कहते हैं, बाजू खोले हैं और वो स्विंग हासिल किया और 6 रन्स भी हासिल किए। तो देखना होगा कि क्या इस शॉट के बाद आगाज होगा बड़ी हिट्स का। ऐसे कट कर दिया, फाइन, 1 रन का और इजाफा। अभी तक एहसानुल्लाह को नहीं लाया गया, जिसके सभी मुंतजिर हैं, और ये जितनी ज़्यादा ये पट्टियां इनको लगी हुई हैं, ऐसा लगता नहीं है कि ये जो है, या देखना ये कि चैलेंज पर ये कितना पूरा उतर सकेंगे और इतनी ज़्यादा ये पट्टियों के साथ बॉलिंग कर सकेंगे। देखिए आसान तो नहीं होगा, जैसे मैंने कहा कि डेस्परेट हालात हैं इस वक्त डॉल्फिन्स के लिए। 4 रन्स मिल जाएंगे। खुशकिस्मती रही है कि ये बॉल विकेट कीपर के हाथों में नहीं गई और रन्स मिले यासिर खान को 4 और ओवर का भी हुआ इख्तिताम 38 बगैर किसी नुकसान के 5 के बाद। आजम खान के बारे में बताया गया है कि वो ज़ख्मी हैं, इसी वजह से दस्तयाब नहीं है एलाइट बैंक स्टैलियंस को। आगे चलकर ये दूसरे राउंड में ज़रूर एक्शन में नज़र आ सकते हैं। इससे इनकी जो हिटिंग पावर है, जिसकी कल कमी लगी थी, और ये फिनिशर हैं, तो ये काम आ सकते हैं। लेकिन देखना ये होगा कि मोहम्मद हारिस भी विकेट कीपर हैं, कैप्टन भी हैं, आजम खान से फील्डिंग कराएंगे या हारिस खुद फील्डिंग करेंगे, एक ये भी कंफ्यूजन रहेगी इस टीम के अंदर कि कहां पे इनको एडजस्ट किया जाए। वाइड का इशारा तो शायद नहीं किया है, लकी रहे हैं, मुझे लगा जैसे बॉल थोड़ा लेग साइडिश था। बाउंसर जरूर दिया है 1 ओवर का। यहाँ पे 38 रन, 6ठा ओवर चल रहा है। ये मरगला की सुबह है, जिसके उस पार से कितने ही काफले, तारीख के कितने ही कारवां यहाँ पिंडी पहुंचकर फिर आगे निकलते थे। सरसब्ज़ शादाब दरख्तें, और दरअसल यही जो है ये गेटवे है पाकिस्तान के ये शुमाली इलाका जात हैं, जिनकी सैर के लिए लोग हमा वक्त तैयार रहते हैं, दूर दूर से आते हैं। यहाँ आउट करार दे दिया गया। क्या ये गेंद लेग स्टंप के बाहर तो नहीं गिरी थी, लेकिन यहाँ अंपायर जो हैं आसिफ, उन्होंने आउट करार दिया। इससे अभी तक ज़्यादा खुश नहीं है माज सदाकत, क्योंकि फॉर्म में थे, और ज़्यादा बुरा लगता है आपको? जहाँ खुश तो वो बिल्कुल नहीं थे, यहाँ मसला नहीं है इस एंड पे। अब वही जैसे आप वाली बात के पिच का हुआ, ये देखना होगा। ये शायद नेक्स्ट स्टंप के बाहर ही पिच हुआ है बॉल, लेकिन अंपायर आसिफ ने बहुत जल्दी अपनी उंगली फिजा में बुलंद कर दी थी। लकी ब्रेक है ये डॉल्फिन्स के लिए। माज सदाकत जो कि इन फॉर्म में वापस जाएंगे 23 रन बना के 38 पर 1।
कप्तान मोहम्मद हारिस नए आने वाले बैटर हैं और ब्रेक थ्रू हासिल किया है कप्तान फ़हीम अशरफ ने। इन फॉर्म मां सदाकत की विकेट हासिल की जो 23 रन बनाए और अच्छा लग रहे थे। अभी वो अपने बाजू खोलना ही शुरू हुए थे कि उनको आउट करार दिया अंपायर आसिफ ने। 2034 रन, 145 की स्ट्राइक रेट है इस लेवल पे, 12-50 हैं। इनमें भी एक बदलाव नजर आया है इस टूर्नामेंट में, थोड़ा वैल्यू कर रहे हैं अपनी बैटिंग को। हारिस शुरू से ही दबाव में लेना चाहेंगे बॉलर्स को और 4 ही गेंदें रह गई हैं। यहाँ हमेशा ही शक रहता है अंपायर के जहन में कि गेंद पड़ी कहाँ है, लेकिन यहाँ कोई शक नहीं था और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि गेंद जो है वो स्टंप्स की लाइन के बाहर थी। यहाँ यकीनन लेग स्टंप के बाहर पिच हुआ था और शायद कहीं थोड़ा ऊंचा भी था, लेंथ बॉल था। अंपायर ने बहुत जल्दी आउट दे दिया, श्योर थे ये। जोरदार शॉट मारा था लेकिन गैप नहीं तलाश कर पाए हारिस, थोड़ा डिसअपॉइंटेड है क्योंकि जोरदार हिट था। एक बार फिर बात करें अगर हम सदाकत के उस डिसमिसल की, तो काफी कुछ देखने वाली चीजें थी अंपायर आसिफ के लिए, क्योंकि एक्शन बहुत तेज हो रहा होता है तारिक भाई। तो क्या क्या चीजें देखनी होती हैं अंपायर को, क्या सोच रहे होते हैं आउट देने से पहले। बहुत शानदार शॉट, इस बार मिड विकेट के ऊपर बासानी रोप को क्लियर किया हारिस ने। गेंद को विद द स्विंग खेल गए हारिस और ये सीधी गई खाली सीढ़ियों में। ये खराब बॉलिंग है फहीम की जानिब से, यही तो इनका एरिया है, यहाँ तो वो बॉल ढूंढते हैं और अगर यहाँ बॉल आप फेंकेंगे तो वो नहीं बख्शेंगे, भले ही वो क्रीज पे नया आए हों। देखिए जोन में था और अच्छा एरिया चूज किया, पावरफुल शॉट है ये, स्टैंड्स में गया है बॉल। बहुत ही अच्छा आगाज है कप्तान की जानिब से। देखिए इनकी हिटिंग एबिलिटीज के बारे में तो कोई शक नहीं है किसी को भी, बस कभी कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी का मसला ज़रूर होता है कि लगातार ये रन्स नहीं करते हैं। और जब आप ऐसे प्लेयर होते हैं जो स्ट्रोक्स खेलते हो तो कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं थोड़ा कम ही होती है, लेकिन जितनी देर खेलते हैं उतनी देर अच्छे लगते हैं, क्रीज पे रन्स आते रहते हैं। ये बॉल थोड़ा नीचे रहा है, ये फ्रेश सरफेस है तो देखना होगा कि कैसा बिहेव करता है। 6 ओवर्स का इख्तिताम 44 पर 1। यहाँ पावर प्ले का हुआ इख्तिताम, अच्छा आगाज दोनों ओपनर्स की जानिब से। यासिर खान और मां सदाकत थोड़ा हमें मोहतात नजर आए शुरू में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब बॉलें मिलती गई तो शॉट्स हमें देखने को मिले। मां सदाकत बहुत ही टैलेंटेड हैं, बहुत ही एग्रेसिव खेलते हैं, बड़ी हिट्स मारते हैं और यासिर भी अच्छी टच में है, अच्छी फॉर्म में है। कैश करना होगा इस फॉर्म को। और आखिर में जाते जाते पावर प्ले एक विकेट भी ले गया मां सदाकत की, लेकिन हारिस ने आते ही बहुत ही धुआंधार आगाज किया, इस छक्के के साथ अनाउंस किया अपने आप को कि वो क्रीज पर आ चुके हैं। एहसानुल्लाह अभी भी फ्रेम में नहीं है। रमीज जूनियर को लाने का फैसला किया गया। कल एक ही ओवर तक इनको महदूद रखा था कप्तान फ़हीम अशरफ ने। पहले ओवर में 13 रन दिए थे और बाद अज़ां इनका इस्तेमाल किया जा सकता था। जितनी पिटाई हो रही थी दूसरे बॉलर्स की, इनका करना चाहिए था इस्तेमाल, क्योंकि ये रन देकर कुछ विकेट ज़रूर ले सकते थे। अच्छा आगाज कल की निस्बत आज रमीज का। जब बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, 100% कि शायद एक ओवर थोड़ा कम था इनके लिए, एक और ओवर करवाया जा सकता था। शायद एक वजह ये थी कि इमाम उल हक थ्रू आउट खेलते रहे, उसके बाद खुशदिल शाह आ गए और उनकी इंटेंट बहुत ही वाज़ेह थी कि वो बड़ी हिट के लिए जा रहे हैं। और लेग स्पिनर, ऑल्दो मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ, जिनका बॉल अंदर को आए लेफ्ट हैंडर को, एक वजह हो सकती है कि इनको एक ही ओवर दिया गया।
देखिए शॉर्ट बॉल इन्होंने की है, जैसे अभी किया है। बॉल गिरा नहीं था कल पहले ओवर में सही तरीके से। यहाँ पे थोड़ा नीचे जरूर रहा है, अगर लेंथ थोड़ा होती तो शायद जो रिजल्ट है डिफरेंट होता। यहाँ यासिर जो हैं उन्होंने पहले बुलावा दिया और उसके बाद जब मुंह मोड़ लिया अपने कप्तान से। यहाँ लेग स्पिन के सामने इन दोनों खिलाड़ियों का ही जो रिकॉर्ड है वो जाहिर है कि उतना काबिल रश्क नहीं है, इसलिए अच्छी चाल फहीम की जानिब से इनको जल्दी लाने की, तेज गेंद की अच्छी डिलीवरी, रमीज की उम्दा फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं और अच्छा एटीट्यूड है। ऐसे ही क्रिकेटर्स आपको चाहिए होते हैं, अच्छे एटीट्यूड वाले, घबराते नहीं है, दिलेर हैं। पिछला बॉल शॉट किया और कम बैक किया। अगला बॉल जो किया, जो लास्ट बॉल था वो बहुत ही अच्छा बॉल था। उस लाइन और लेंथ पे, उस पेस से जैसे आपने कहा ज्यादा बॉलिंग करनी होगी एग्जैक्टली इसी जगह पे। तो अच्छी बात है, जितना जल्दी सीखेंगे इस लेवल पे उतना ज्यादा नाम बनेगा इनका, क्योंकि अब T20 क्रिकेट में मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है। आप एक ओवर में ही आपको अगर रन्स लग जाएं तो कप्तान ज्यादा ट्रस्ट शो करता नहीं है, लेकिन लेग स्पिनर पे कप्तान का भरोसा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये विकेट टेकिंग ऑप्शन होते हैं। अगर कप्तान आप दलेर हो, आप पे भरोसा करे, तो ये हमेशा आपको गेम में वापस ला सकते हैं किसी भी मौके पे। बिल्कुल। ओह शानदार डिलीवरी, बेबस हो गए हारिस। और गेंद स्पिन हुई, बाउंस हुई और जाकर सीधी ऑफ स्टंप की चोटी पर लगी। और यहां ये पामाल किया उन्होंने हारिस जैसे खिलाड़ी को। शाबाश रमीज। लग रहा था तो इस लास्ट दो बॉलों से ही लग रहा था कि ये कुछ करने लगे हैं, क्योंकि अच्छी जगह पे बॉल गिरा था। ये एक आइडियल डिलीवरी है, बिल्कुल ही ऑन साइड पे खेल गए, समझ ही नहीं सके। एक अच्छे जगह पे पड़ा हुआ बॉल जो टर्न हुआ, बिल्कुल जो शैडो प्रैक्टिस कर रहे हैं शायद ऐसे ही खेलना चाहिए था। 7 रन्स बनाए हारिस ने और रमीज ने उनकी विकेट हासिल की 47 पर 2। बाएं हाथ से बैटिंग करने वाले हुसैन तलत को प्रमोट किया गया है। पिछले मैच में शोएब मलिक आए थे इनसे ऊपर। अच्छी फॉर्म है इस टूर्नामेंट की। सेंचुरी जो बनी अभी तक इन्होंने ही बनाई है, पहले मैच में 100 रन्स बनाए थे। देखना होगा कि जब एक लेग स्पिनर इन फॉर्म होता है, तारिक भाई जैसे अभी आपने कहा कि अच्छी जगह पे बॉलिंग भी कर रहे हैं, तो क्या लेफ्ट हैंडर हो क्या राइट हैंडर हो, लेग स्पिनर हमेशा ही खतरनाक होता है। 3445 रन, 1950, 125 की स्ट्राइक रेट, एवरेज भी इंप्रेसिव है 31 की। अच्छे कंसिस्टेंट क्रिकेटर हैं ये भी, और ये मौका भी अच्छा है, टाइम भी अच्छा है, काफी ओवर्स हैं कि अपने आप को सेट कर सकते हैं और बड़ी इनिंग खेल सकते हैं टीम के लिए। अच्छा आगाज किया है रमीज जूनियर ने, ऑन टारगेट रहे हैं इस ओवर में। 7 ओवर्स गए, 48 पर 2। स्टालियंस जो हैं शायद वो स्ट्रगल कर रहे हैं अभी, सिर्फ 48 रन बनाए हैं 7 ओवर्स में, और इनकी अभी स्ट्रगल जो है वो कम नहीं हुई है, शायद बढ़ गई है, क्योंकि अब वापसी हुई है एहसानुल्लाह की। क्या शानदार आगाज किया था अपने करियर का, HBL PSL में बेहतरीन बॉलर करार पाए थे, लेकिन उसके बाद इंजरी के बायस थोड़ा गायब हो गए। 36 विकेट्स हैं इनकी, 5 विकेट्स इनकी बेहतरीन बॉलिंग। तो तमाम पाकिस्तान की ही नजरें होंगी इस बॉलर के ऊपर। देखना होगा कि अभी कितने फिट हैं, किस तरह का रिदम है, कैसी बॉलिंग करते हैं इस टूर्नामेंट में।
ये वाइड रहेगी। अच्छा आगाज नहीं हुआ। बहुत अरसे के बाद वापस आए हैं रजिस्टर्ड क्रिकेट में एहसानुल्लाह। फास्ट बॉलर जो हैं, आप जितने भी टैलेंटेड हो, जब एक बार आप जख्मी होकर वापस आते हैं तो रनअप वही है, लेकिन थोड़ा सा खबरदार होकर भाग रहे हैं, ज्यादा तेज नहीं आ रहे, बड़े डग भी नहीं है। तो जब आप जख्मी होने के बाद वापस आते हैं फास्ट बॉलर्स, तो जो एक्यूरेसी और जो रफ्तार है वो दोनों को बरकरार रखना मुश्किल होता है। दोनों में से एक चीज़ ज़रूर मुतासिर होती है, ज़्यादातर रफ्तार और एक्यूरेसी में से कम से कम कुछ अरसे के लिए। यार स्पेशली अगर आपकी जो इंजरी है वो बाजू की है, कोहनी की इंजरी हो, तो पेस में फ़र्क तो आता है, उस तरीके से बॉल आप डाल नहीं पाते हैं। अब यही नज़रें रखनी होंगी कि यहाँ पे कैसा रिदम नज़र आता है, किस तरीके से बॉल करते हैं, पेस कैसी है, ये बहुत ज़रूरी होगा देखना। क्योंकि भाग तो सही रहे हैं, एक्शन भी सही लग रहा है, रिदम भी सही लग रहा है, क्या कंसिस्टेंटली ऐसा कर सकेंगे ये भी देखना होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए कि वापस रिदम में आए। और ये कंडीशंस जो हैं यहाँ पे रावलपिंडी में इनको सूट भी करेंगी, जो हार्ड सरफेस है और इनके जैसे बॉलिंग एक्शन है, जो मारते हैं पटकते हैं बॉल को, तो शायद इस चीज़ की ही तलाश थी डॉल्फिन्स को अपने बॉलिंग यूनिट में। अली, ये अक्सर जो बल्लेबाज हैं जब उनको ये एल्बो इंजरी होती है तो देखा है कि वो वापसी कर जाते हैं, उसके बावजूद अच्छी हिट थी लेकिन सीधी वहाँ हुरैरा के पास गई। सचिन तेंदुलकर की सबसे बड़ी मिसाल दी जाती है कि वो वापस आ जाते हैं। फास्ट बॉलर्स के लिए ज़ाहिर है और ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है। अच्छा एक्शन है, स्मूथ रन अप के साथ आ रहे हैं, अभी तक तो सब सही लग रहा है। थोड़ा कॉशियस ज़रूर है, थोड़ा मोहतात हैं, क्योंकि आप उनकी नज़रें भी क्रीज की तरफ रह रही हैं और नेचुरल है ये। अरे वाह क्या बात है, इसी रिदम की तलाश है शायद सारे पाकिस्तान को ही कि एहसानुल्लाह 100% फिट होके वापस आए। यहाँ लेंस से बाउंस रफ्तार जिसने कप्तान को सोचने में मजबूर किया होगा कि गेंद जो है वो अगर इतने बड़े मार्जिन से वो मूव करा सकते हैं तो क्यों ना स्लिप खड़ी की जाए, क्योंकि यासिर जो हैं पसोपेश से काम लेंगे अब और ज़्यादा इनके सामने, क्योंकि ये चार्ज करने से तो शायद ग्रेज करेंगे इन्हें। मिड ऑन पीछे है, मिड विकेट भी। इसे ड्राइव कर दिया है बाकमाल तरीके से, बिल्कुल नहीं घबराए हैं यासिर। आगे पड़ा हुआ बॉल जिसे शानदार तरीके से प्लेस किया है एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के दरमियान, और 4 रन हासिल किए हैं यासिर ने। दलेराना शॉट था, पिछली गेंद को फौरन इस जहन से निकाल दिया और अगला कदम आगे लाते हुए सीधा दे मारा गैप में। ये रुकने में नहीं आती रावलपिंडी में, जब एक बार नई गेंद हो या पुरानी निकल जाए दायरे से गैप में से। अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा, इस बार 2 रन जरूर हासिल किए आखिर में, लेकिन इस ओवर में आजमाइश की उन्होंने यासिर की, जो कि सेट भी थे। अच्छा आगाज किया है सानुल्लाह ने, 8 के बाद 56 पर 2। Well, right now, Engro Dolphins have the control of the reins
of Allied Bank Stallions. A very steady start, 2 down already on 56. Ramiz Jr. to continue. Tossed up, picked up, and it will travel all the way. Huge blow from Hussain Talat. Ramiz Jr. picked up a 1 wicket early on, but this time it's not the right area to bowl, especially against someone like Hussain Talat who can go big effortlessly. Overpitched and deposited over the ropes. Man in form, Hussain Talat. He's got the start. He needs to be around. That is what his role is. And make sure that the team keeps on going well with the run rate. Ramiz was the best bowler in the President's Cup 4-day competition. Hasn't played much wide ball though. But he's somebody who bowls brilliantly. You see this classic leg spinner's dismissal, drift and turn and Harris. Well, he had other ideas. Playing against the spin, hoping that the ball would come straight. This is wonderfully bowled once again. I think Ramiz needs a bit of confidence, a few games to get going. I think a spinner like him can be a great addition to any bowling lineup because he can turn the ball, he's consistent and can give you wickets, especially in the 50-over format. Another thing I like about him is that he's not afraid to pitch it up. Again, tossed nicely, bit of turn there. Even in the longer format, we've seen that he went for a few runs, yes, but again, he was brave enough to keep on repeating that line and length, tossing it up. Absolutely, Marina. He's one of those rare spinners who, being wrist spinners, are very consistent. And what I saw of him in the 4-day cricket when we were commentating at the Gaddafi Stadium, he was playing for Lahore. He was very consistent with the line and length. He bowled 64 overs in 1 innings, picking up 6 wickets. And he had about 4 chances dropped off him and about 2 stumps and still took 6 wickets. And we know it was a run fest in Gaddafi, but he troubled the batters. Somebody who can be a very useful asset. Pushing hard for the second one, will need to hurry. Oh, better throw and a better pickup would have created problems for Hussain Talat. Rather Yasser at the end. Again, off the back foot, running hard. Clear loud call of 2. And Yasser just not in the straighter line. But in the end, the dive has saved him. Yes, Yasser has had a bit of a rough time, especially while running between the wickets. He's already been run out in this competition. And he's looked good always. Looked like a batter who can take the opposition to the cleaners. We know he's such sort of a player. Hussain Talat is a good runner between the wickets and a good judger of the run as well. We saw himself with Tayyib Tahir in the previous edition of Champions Cup score a brilliant partnership in which they ran wonderfully. He's the top scorer in the tournament so far, 172 runs. Imamul Haq not so far with 166, but Hussain Talat's strike rate stands out. Oh, drop shot. And there is no problem whatsoever for Yasser off the back foot. Just getting into the line and easily put it away for a maximum. Ahsanullah is in his first game after a long layoff. So this is not the ideal length to bowl. He just needs to settle down. This is a wonderful pitch, good cricket pitch, which has some pace, some carry to the keeper. But the direction needs to be much better. This one was going towards the leg side, offering the batter a free hit. And Yasser is too good to miss out.
better line on this occasion. Yeah, it has been a long wait for Asanullah. Coming back after 18 months. He played his last ODI against New Zealand in the same ground back in 2023. There's no doubt about the potential and the hunger that he has. It's good to see him back in form. Yes, once he gets into the rhythm, gains the strength, and also plays a few games, things will certainly get better for him. That's a good delivery, pitched up. He's got protection, and now bowling with the field and the protection he's provided. Hussain Talat back on strike. They've started to gain some momentum now, Allied Bank Stallions. 73, 2 down into the 10th over. They do need to accelerate. Yes, the conditions were conducive for fast bowlers early on, and they did bowl well, Engro Dolphins. But as you mentioned, it is a decent surface for batters. Runs are there up for grabs. Straying down the leg, off the hips. What would be an ideal or a better line for Asanullah, especially on this surface where he's getting some bounce? Well, obviously, he needs to be hitting the deck hard, bowling the hard lengths, and also tucking up the batter, not allowing any room to free the arms. So, simple, straight, and on length. That is the way to go for him. One doesn't expect him to just fire or cylinders on the first game that he's back. But that instinct that he has to bowl quick and to be on top of the batters, that is very much there. And it is good to see. It's perfectly fine. The instinct should always remain alive. But it's just ease into his instincts. Don't rush them. That is the way to go, and I'm sure the coaches and the captain and the mentor would be telling him, because if he turns back to his full rhythm, he can be a very good asset for Pakistan cricket. Yeah, it's just the eagerness and probably the desperation for every player who's making a comeback to just come in, quickly make an impression that he's ready to go. Asanullah went for a maximum, the first delivery, some damage control done. Drop shot, he's got protection, will be pushing for the second one. It's not available. Single to end the over. 10 overs gone, 77 for 2 Allied Bank Stallions. And it's time for drinks.
Well, halfway through the first innings, ABL Stallions 2 down on 77. This partnership brewing up nicely. 30 off just 19 deliveries. Hussain Talat and Yasir Khan still out in the middle. Engro Dolphins have done well. They started off well. Yasir still there on 34. Mars 23 off 16. Harris was undone by a brilliant delivery by Ramiz. Hussain Talat on 12. They've got plenty of batting to follow. They can now afford to accelerate from this stage onwards. Mars and Yasir started off rather very cautiously. This was brilliant from Ramiz. Just a slight bit of turn, playing all over it. Harris, and he's back in the hut. But this partnership now, they should be looking to go big. Qasim Akram has been expensive, one each for Fahim and Ramiz Jr. Samin Gul started off well, but wasn't able to pick any wickets. We've seen teams pushing, especially after the halfway through. And they have the ability and the courtesy of batters to follow, to accelerate now. Beautiful Rawalpindi. Cool weather. It's bright today, brighter than a few days that we've had in the tournament. So it's baking the pitch down as well. We can expect the pitch to get better and better as the day progresses because of strength of the heat, which is definitely different. You could feel a stronger sun today, and it's good to see. We'll keep some of us here in the box at ease as well. Yeah, just a projected score. Ramesh to continue. Now tossed up. He's getting some purchase. Shoaib Malik, Mohammad Mohsin, they move to follow. I wonder if Shoaib Malik is all right, because we didn't see him in the warm-ups in the morning. So hopefully he's not carrying a niggle. He's a live wire in the field, and we have seen him take the hot spots and grab the chances that were available. One of the very few people who are as good at catching as he is. One of the best Pakistan has had. It's wonderfully bowled. Sharp spin that. And Hussain Talat does well off the back foot. Leg spinners are, good leg spinners are always likely to pick up wickets. Yes, they can be a touch expensive at times, but they can also run through a team and damage the opposition. But they need confidence, and good captains make good use of them. Tighter lines in length. Yasir, he loves to play off the back foot. So I have to be careful because Ramiz is not a taller lad. He bowls with a slightly flatter trajectory. Won't get some decent amount of bounce. So you have to be careful playing him off the back foot. Stockily built. Once again, right on target. And since that 6 that Hussain Talat hit him over his head, he has not flighted at ball. He's just bowling tight line, tight length, not giving anything away, which is good because these two batters are dangerous. And he is making sure that his overs get going through pretty economically and asking the batters to come and take the risk. Yeah, he's landing it on the right length, not shorter, but a little quicker through the air, especially to Hussain Talat. Ballooned it up. Should be an easy take. Has it taken? Yes, it has. And Yasir takes the trap. Ramiz Jr., another one gone down for ABL Stallions. Well, this is leg spinner for you. He comes in, he picks up a wicket, and nearly this easy chance was going to be messed up. First, the keeper turned, he looked to go for it, and then he just changed his mind, and luckily
Salman Irshad, being the fast bowler, makes a big effort. Just have a look at this. Clark turns and then he just waits for Salman Irshad to come and rescue. So important that the wicket goes down. A set Yasir could have been very dangerous, but he leaves for 36 as it's 3 down for 81 for a right bank Stallion. Another breakthrough for Engro Dolphins, courtesy Ramiz Jr.'s bowling. Yasir, a set batter, looking to accelerate, and that was the good idea, but shot selection was questionable. Mohammad Mohsin joins Hussain Talat in the middle. Mohsin is also a very talented lad, but he hasn't had an outing where he had a few overs to play. So today is the time. It's nearly half of the overs that remain, and it's the time where he'll be required to bat to build up a partnership. Once again, beautifully bowled, and captain backing up with the slip. That is good to see. 11 gone, and it stays at 81 for 3 for Stallions. Crowd coming in. It's a sunny afternoon. Cricket always a delight to watch. Fahim Ashraf will be content with how things have gone so far for Engro Dolphins. 3 down on 81 now. Hussain Talat will have to dig deep. Mohammad Mohsin can back. Salman Irshad now to continue. Not continue, he's getting the ball for the first time. Was expensive the other day. Starts off well, pushing hard for the second one. No is the call. Seems as if Dolphins have made up their mind that out of last 9 or 10 overs, Salman will bowl 4. And this is another view of this dismissal. A very important one for the Dolphins, and well taken by Salman. Just have a look at Mr. Clark. Think about it and then leaving it to the lanky fast bowler. And in the end, both enjoying the catch being taken. And Ramiz picks up the important wicket. Bowling well, getting a bit of turn and adjusting well to this format. All leg spinners require confidence, and captains play an important role in their build-ups. Salman Irshad is also someone very dangerous at the death bowling. Just trying to create some room, Mohsin. Slightly shorter, wanted to free his arms. The line wasn't there. Salman Irshad was expensive in his spell, giving away 55. Beautiful scenes here. If you visit these twin cities, you'll have a great outing. Seems like 3 stumps from far away. And where are the umpires with the bails? It's a beautiful city. Faisal Mosque behind those long towers. As there's another dot ball for Engro Dolphins. So they are, after picking up the wicket, they have shifted the pressure on the Allied Bank Stallion batters. Now that dilemma that we are seeing happens at this time of the innings. From 10th over onwards till the 15th, this is where teams have lost most wickets in this competition. And this is the place where you have to be sensible as batters. You don't have to take a lot of risk, but you have to be good enough to score 8 to 10 runs risk-free, run well between the wickets, rotate strike, and get a boundary. And this is a stroke over the head of the bowler, and this will be the boundary that we are talking about. And Mohsin
gets off the mark with this beautiful stroke over the head of the bowler. He's a strong lad. I've seen him once bat against Wabda, and he was playing for KRL, and he played a wonderful knock. I think he scored 90 runs in that, and Wabda used to have very good fast bowlers. So it would be interesting to see how he goes at this stage. Just wanted to guide it to the third to take the single. Yeah, the potential is there. As you mentioned rightly, they can accelerate, but they need to pick the bowlers and also the areas where they can be aggressive, but in a controlled way. Don't need to give away your wickets. Well, he's getting ready. Yes, the famous black bandana underneath the helmet. Something that he has been making his own, along with Imran Farhat. He also used to have a bandana underneath the helmet. And this one is well bowled once again. An edge down to the third for a single, as 12 overs are now completed, and the ABL Stallions move to 87 for 3. शुएब मलिक, तैमूर, मेहरान मुमताज आने वाले बैटर्स के नाम। काफी आज तेज हवा चल रही है यहाँ पे पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है ये हुसैन तलत और मोहसिन के दरमियान। रमीज जूनियर अपने स्पेल का आखिरी ओवर शुरू कर चुके हैं। 2 खिलाड़ियों को आउट किया और अब उनका बॉल जगह पे गिर रहा है। ज्यादा तवील कामत नहीं है रमीज जूनियर, लेकिन जिस तरह का एक्शन है, थोड़ा सा साइड आर्म से आते हैं तो लेग ब्रेक अच्छी करते हैं। गुगली भी है इनके पास। कदमों का इस्तेमाल देख लिया था मोहसिन ने, इसलिए गेंद को दूर किया रमीज ने मोहसिन को, और सिर्फ एक ही रन बना। रमीज जो बोला है ठीक है ना। काफी धुंधली सी सुबह थी, वो बिल्कुल खिल गई है। काफी दूर तक आप नज़ारा देख सकते हैं, जो विजिबिलिटी है वो बहुत अच्छी है। खूबसूरत चमकीली धूप निकली हुई है इस वक्त रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। वाइड का एक रन कंसीड किया रमीज ने, लेकिन आपको नजर आया कि गेंद में ब्रेक हो मौजूद है। ऑफ की फील्ड 5 फील्डर्स हैं ऑफ साइड पर, और स्क्वायर के पीछे 2 फील्डर हैं प्रोटेक्शन दे रहे हैं अगर कोई शॉर्ट बॉल हुई रमीज से तो। जोरदार स्ट्रोक, और ये गेंद मैदान में रुकने वाली नहीं। मोहसिन ने भांप लिया था रमीज की फ्लाइट और लेंथ को, और उसे रवाना कर दिया। जहां बासलाहियत मोहसिन अब तक अच्छे लगे हैं, सीधे बल्ले के साथ भी, और बड़े शॉट लगाने की भी अहलियत है। खास ताकतवर स्ट्राइक किया, अपना अगला कदम खासा पीछे हटा लिया था, बल्ले को पूरा रास्ता मिल गया। महसूस हुए इस शॉट की फ्लाइट से मोहसिन। कट शॉट मजबूर किया शॉट गेंद करने पर, लेकिन एक से ज्यादा नहीं मिल सकेगा। अच्छी फील्डिंग की, बर वक्त पकड़ और रिलीज भी साहबजादा की। बाकी दिनों की निस्बत अच्छी हवा आज चल रही है। शायद यही वो वजह थी जिसकी वजह से धुंध जो है वो छट गई जल्द ही,
और पस मंजर में आप देख सकते हैं मारगला की पहाड़ियाँ। दो की कॉल है लेकिन मना कर दिया मोहसिन ने। सिंगल के साथ ओवर का इख्तिताम 13 के बाद 98 पर 3। खूबसूरत रावलपिंडी इस्लामाबाद का ये जुड़वा नजारा है। आप देख सकते हैं आसमान में ऐसी जो परवाज है ये स्टैलियंस भी अब करना चाह रहे हैं। और दूसरे राउंड के लिए वापस चले आए। अच्छी पार्टनरशिप इन दोनों खिलाड़ियों के दरमियान अब जमने लगी है। मोहसिन को आज मौका मिला नंबर 4 पर, क्योंकि पहले बहुत कम गेंदें इनको मैसर आ रही थी। नंबर 6 इनकी बैटिंग सलाहियतों के एतबार से ज़्यादा डीप था, तो किसी के लिए भी वो डीप हो सकता है। शाह साहब, T20 क्रिकेट में बैट्समैन के लिए, स्पेशलिस्ट बैट्समैन के लिए बिल्कुल, और कुछ गेंदें जो है वो बचती हैं अक्सर औकात अगर आपके टॉप ऑर्डर अच्छा खेल जाएं। मजबूर किया गलती करने पर फील्डर को इससे पहले बैकअप किया जाता, रन हासिल कर लिया गया। इजाफी उनकी फील्डिंग पर सवालात रहे हैं डॉल्फिन्स की। यहाँ पे मिर्जा थे, बॉलर बिल्कुल भी खुश नहीं है। एक रन भी नहीं था यहाँ पर और 2 रन कंसीड कर गए। सलमान इरशाद जो कल काफ़ी महंगे, एक ही रन हुआ है, माजरत चाहता हूँ। सलमान इरशाद जो कल भी काफ़ी महंगे साबित हुए थे, वो कोशिश करेंगे कि उसका आज मदावा करें। अभी तक तो अच्छी बॉलिंग की है उन्होंने। सेंचुरी मुकम्मल हो गई है। दोनों बैट्समैन अब सेट हो चले हैं और ड्रामाई शॉट खेलने के लिए गए थे मोहसिन जो है, लेकिन नाकाम रहे कनेक्ट करने में अपने कंधे के ऊपर से। तो बेहतर ये होगा कि अपनी ये ताकत पे ज़्यादा खेलें। ये गैर रिवाती बैट्समैन नहीं है, इनकी अच्छी टेक्निक है, अच्छा बैलेंस है। अच्छी जब आपके पास टेक्निक होती है तो आप ख़तरा मोल लिए बगैर भी शॉट्स खेल सकते हैं, बाउंड्री शॉट्स। वाइट बॉल का इशारा, स्लो बाउंसर था, काफी ऊपर से निकल गया। हरिक भाई, जो अभी हमने शॉट देखा, जो रैंप करने की कोशिश की, अब ये कोई अनयूजुअल शॉट रह नहीं गया आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट में, लेकिन इस टूर्नामेंट में हमने देखा है कि काफी प्लेयर्स ने अटेम्प्ट किया है, एक्सिक्यूशन उतनी बेहतर नहीं है। मुझे शायद उस शॉट के अटेम्प्ट करने से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये शॉट मॉडर्न डे शॉट है तो आपकी इतनी परफेक्शन होनी चाहिए कि जब मैच में आप ट्राई करें तो उसको एक्सिक्यूट भी कर सकें। यहाँ सही तरह एग्जीक्यूट नहीं कर सके मोहसिन। लेग साइड में 1 रन का और इजाफा। कि देखिए, इसमें भी आम शॉट्स की तरह आपको बॉल को पिक करना होता है, फील्ड को मद्देनजर रखना होता है, और इन सब के होते हुए आपको टाइम करना होता है, अपनी जो मूवमेंट्स हैं और बल्ले और गेंद का मिलाप। इसके उसूल बाकी तमाम शॉट्स वाले ही हैं, लेकिन हमें जो परसेंटेज नज़र आ रही है कि ट्राई तो बहुत किया जाता है, लेकिन ये शॉट जो है वो एक्सिक्यूट नहीं हो पा रहा। यहाँ इन्होंने बेहतर शॉट खेल दिया, ये लेफ्ट शॉट खेला हुसैन तलत ने, जिनके बेशतर रन्स फास्ट बॉलर पर
विकेटों के पीछे आते हैं। ये उन्हीं में से एक था। अच्छा एंगल का भी इस्तेमाल किया, उससे भी इनको मदद मिली, लेकिन नज़र बिल्कुल नहीं हटाई हुसैन ने। जरूर आंसर इसमें होता है प्रीमेडिटेशन का, लेकिन आप हुसैन की मूवमेंट देखें तो काफी तेजी से वो मूव किया, और जब तक बॉल उनके नजदीक आई वो काफी स्टिल हो चुके थे, इसलिए कनेक्शन हासिल करने में आपको बेहतर चांस मिलता है अगर आप स्टिल हों और पोजीशन पहले ही बना लें बॉल के पहुंचने से पहले ही। इस बार फिर स्वीपर प्ले में आए, एक ही रन मैसर आ सका जो इस ओवर को डबल फिगर में ले गया। 14 के बाद 108 पर 3। ये 154 रन जो हैं ये शायद इतने ज़्यादा ना हों यहाँ डॉल्फिन्स के लिए। एलाइड बैंक स्टैलियंस की टीम कल 170 के ताकुब में 3 रन से मैच हारी थी, क्योंकि जो बैटिंग करने के लिए हालात हैं वो दोपहर के बाद बेहतर हो जाते हैं और भी ज़्यादा। तो 170 तक तो यहाँ इन्हें पहुँचना ही चाहिए। शुएब मलिक, तैमूर खान को आना है, मेहरान मुमताज़ आ जाएं, और ये गेंद चली गई फाइन लेग के ऊपर से। रन्स बाउंड्री के पीछे अब आसानी आने लगे हैं, और ऐसा अक्सर होता है जब मौजूद हूँ हुसैन तलत। ये इम्प्रोवाइजेशन काफी महारत से करते हैं, हमने देखा है। इस मरतबा भी सही गेंद का इंतखाब किया, क्योंकि गैप तो मौजूद था, लेकिन ये बेहतर एक्सिक्यूशन थी। तो गलती पे मजबूर करते हैं इस तरह का शॉट खेलकर। यहाँ दूसरा रन बनाना चाह रहे हैं, लेकिन शायद मौजूद नहीं है। वो जो 154 का हिस्सा नजर आ रहा था प्रोजेक्टेड स्कोर, वो काफी नहीं होगा जैसे आप कह रहे थे। और आज विकेट कदरे बेहतर भी है और दिन भी गर्म है। गर्म उस तरह तो गर्म नहीं, लेकिन इस साल के इस हिस्से की मुनासबत से निस्बतन गर्म मौसम है, तो सेकंड टाइम जो बैटिंग होगी वो शायद मजीद बेहतर हो जाएगी। और ये जो 11 रन पर ओवर का जो प्रोजेक्टेड स्कोर है, ये ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है चेजिंग टीम के लिए। जोरदार शॉट, अच्छी आवाज आई और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। कासिम अकरम एक मर्तबा फिर गेंद को पीछे गिराने के मुर्तकिब हुए और उसकी उन्हें पूरी पूरी सजा मिली। जहाँ ऑफ स्पिनर जो है ये लाइन में कई बार उसे गलती का इतना खुमियाजा नहीं होता, लेकिन लेंथ पर ऑफ स्पिनर को कभी समझौता नहीं करना चाहिए। वो इसीलिए कहते हैं मोहसिन ने पूरा फायदा उठाया, बड़ी जल्दी पिक किया उन्होंने इस लेंथ को। एक और शॉट बेदर्दी के साथ खेला मोहसिन ने, और ये 4 बल्कि 6 ये गेंद जो है ज्यादा ऊपर नहीं गई, लेकिन बाउंड्री के पार उतरी। खिंचा हुआ गेंद था, लेकिन बहुत ही जोरदार स्ट्रोक। अंपायर देखना चाह रहे हैं कि ये चौका है या छक्का। और कासिम अकरम जिन्होंने 4 ओवर्स में 21 रन कल दिए थे, और 3 खिलाड़ी आज अभी तक 29 रन दे चुके हैं। ये तो शायद शक और शुबे की कोई गुंजाइश इसमें नहीं थी। 1.5 ओवर्स में 29 रन दे चुके हैं कासिम अकरम। प्रेशर महसूस कर रहे हैं इस मर्तबा। अंपायर ने वाइड करार नहीं दी। मोहसिन हैरान परेशान देखते रह गए। वापस आकर देखेंगे रिप्ले। 15 के बाद 125 पर 3।
सबसे महंगा ओवर था पिछला, जिसमें 17 रन्स बने। एक चौका लगाया था हुसैन ने और 2 छक्के लगाए बाद आजम। मोहसिन ने 26 पर जा पहुंचे 3 छक्कों की मदद से। बाउंड्रीज, बड़ी बाउंड्रीज ज्यादा लगा रहे हैं। चौका सिर्फ एक ही उनकी इनिंग्स में। हाँ, स्टैलियंस का इस टूर्नामेंट में बोलबाला हुआ है सिवाय कल के। बहुत मकबूल टीम है शायकीन में आज भी स्टैलियंस। ये पिछले ओवर में जो 2 छक्के लगे, पहले शॉर्ट गेंद थी और उसके बाद बहुत बाहर से दे मारा, अच्छी क्लीन हिटिंग। लगता है कि ये शॉट्स जो हैं इनमें बल्लेबाज गुस्सावर भी नजर आ रहे हैं, जैसे अब पिछले मैचेस में इनकी बैटिंग नहीं आ पा रही थी। फुल टॉस, ये इनायत थी रन्स की। ये नो बॉल भी हो सकती है। 4 रन्स उसके अलावा होंगे। कंट्रोल लूज करते हुए नजर आ रहे हैं एंग्रो डॉल्फिन्स। यहां पर इखलाक आए अपने कप्तान के पास लेग स्टंप लाइन पर। इतनी ऊंची फुल टॉस, फाइन लेग का फील्डर दायरे के अंदर। सिर्फ 4 ही रन का खमियाजा भुगतना पड़ा फहीम अशरफ को। 6 भी हो सकते थे, लेकिन अभी अंपायर शायद चेक करना चाह रहे हैं इस बॉल की हाइट को। ये पांव से फहीम अशरफ की जो नो बॉल है ये बहुत कम होती है, लेकिन ये हाइट के मुतालिक टीवी अंपायर इसे देखने चले हैं। यहाँ अपने पांव से इन्हें कम ही खतरा रहा है अपने करियर में, लेकिन यहाँ पर इस सेंट पर भी सब सही है फहीम के लिए। इससे सिर्फ 4 रन्स ही मिल सकेंगे एलाइट बैंक स्टैलियंस की टीम को। सिर्फ 18 गेंदों पे 30। मोहसिन 2 की कॉल है, लेकिन एक ही आएगा और पार्टनरशिप की 19 सेंचुरी भी मुकम्मल हो गई इस 1 रन के साथ। सिर्फ 28 गेंदों पर बहुत ही जबरदस्त पार्टनरशिप थी। तीसरे खिलाड़ी जब आउट हुए थे तो 81 स्कोर था। एंग्रो डॉल्फिन्स के पास मौका था कि वो गेम में वापस आए विकेटें लेकर, लेकिन इस पार्टनरशिप ने एक प्लेटफॉर्म दे दिया है जहां से लॉन्च कर सकते हैं एलाइट बैंक स्टैलियंस। और वो जो 170 का हिस्सा है जिस तक पहुंचना चाह रहे हैं, उसमें अच्छी खासी पेशरफ्त की है इस पार्टनरशिप ने। इनटू द पिच स्लो डिलीवरी थी और इसके साथ ही अंपायर ने वाइड का इशारा दिया। बॉल काफी ऊंचाई से निकल गई। उबैद शाह, इनके लिए कल का दिन ज्यादा अच्छा नहीं गुजरा था बॉलिंग में। अच्छा रफ्तार में रद्दोबदल, फहीम अशरफ ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं आमतौर पर लेफ्ट हैंडर के खिलाफ, क्योंकि वो एंगल है, उसी वजह से जो थर्ड के फील्डर हैं उनको भी वो पीछे ले गए हैं। विकेट में ग्रिप है यहाँ पर। पिच रिपोर्ट पे भी जिक्र कर रहे थे कि इतनी ज़्यादा गरमाइश मिलती नहीं विकेट को। जो मॉइस्चर ओवरनाइट आता है वो उससे विकेट उतनी ज़्यादा कॉम्पैक्ट नहीं हो पा रही जितनी पहले 2 दिनों में थी। तो फिर गैप ढूंढने में कामयाब हुए। फील्डर मौजूद थे स्वीपर, लेकिन उनके बराबर से गेंद निकल गई। अच्छा टाइम किया हुआ स्ट्रोक था हुसैन तलत का और ओवर की दूसरी बाउंड्री हासिल की। बॉलिंग अब ऐसा ऐसा पसपा होने लगी है। इस बार क्रीज का अच्छा इस्तेमाल
किया, बहुत ज़्यादा डीप जाकर सामने खेलने में कामयाब हुए। हुसैन तलत आमतौर पर पुल शॉट जो है ये कम ही इनके बल्ले से आता है। 55 रन की ये पार्टनरशिप हो गई सिर्फ 30 गेंदों में। इससे शुएब मलिक खुश होंगे। कदमों का अच्छा इस्तेमाल किया, गेंद गैप में भी है और अच्छा रोका इसे। वहां पर मोहम्मद सलमान ने उम्दा आउटफील्डिंग का मुजाहरा। यहाँ पर सिर्फ 2 ही रन हासिल हो सके। यकीनी बाउंड्री उन्होंने बचाई। इसके बावजूद ओवर जो है वो 13 पर मुंतज हुआ, 138 पे 3। $57 runs coming off last 5 overs. 11.4 the run rate, so they're just picking up the pace, these two batters. Good partnership building. Rashad just giving himself room, looking for 2. They're gonna get it. It's coming back for it to Santhalat. Both very fit, Santhalat and Mohsin, making it easy in the end. Former captain Salman Butt alongside me. Salman, it's good that 2 middle order batters are performing, especially a youngster, Mohsin. Thank you, Ali. Yes, very heartening to see the kind of partnership that these 2 batters have put up. Inside edge there, but tremendous running between the wickets. Good intent, aggressive intent. And this is the place, this is rather the time of the innings where the teams mostly have faltered. They've lost wickets and been not able to put up a partnership or maintain a run rate. So it is excellent partnership in that regard. They have got a good platform to launch from here onwards. Although Salman Irshad is a wonderful bowler at the death, but this sort of a partnership can put pressure on any bowler. And Mohsin has been very impressive. Hussain is in great form and both making full use. Mohsin has played lots of club cricket, lots and lots of matches. So he's somebody who's battle hardened the rough way. And that is where you feel as if he is coming in. And today is the first time that he has actually got a few overs to bat. And he's done well so far. And that's where the credit should be given to the management of Allied Bank Stallions. They had Shoaib Malik, Taimur Khan, but they promoted Mohsin up the order just to give him that feel and get some confidence, because we all know, living in Lahore, what he's capable of. And in the era, in the world where everyone wants to be an opener, Salman, especially in Pakistan, somebody like Mohsin coming in middle order, playing at number 5 and showing the skills that he can hit big, as you said, it's very heartening to see. Very rightly put, Ali. Lots of credit needs to go where it's due, and the management have taken a good decision, and the youngster has responded. He certainly has the talent, and he has always been a middle order player. It's a wonderful effort by the cover fieldsman. It's Fahim Ashraf, the captain, making a very valiant effort, but the ball falling short. I hope he's all right. He's not feeling absolutely okay, but then at times when you fall full length, you can feel the jerk. Just have a look at this replay. Have a look at Fahim go. Yeah. Important player in the Engro Dolphins side. Captain too. It was in the slot. He couldn't mirror it. And another man who is great to see Ihsanullah back, playing on field, getting rid of this very prolonged injury and coming back and bowled reasonably well. It's a long layoff, so it's very good to see him back too.
2 for 19. His figures so far is yet to bowl his remaining 2 overs. We will see him probably from the other end. He's connected that all right for 4. That is great shot from Mohsin. He's disappointed. He bowled a good over until this happened. Showing the range of shots, Mohsin. 10 off the over, 148 for 3. Engro Dolphins bowling card. Sameen Gul bowled wonderfully up front with the new ball. He swung the ball, 3 overs for 23, but no wicket for him. Qasim was expensive, 2 overs for 29. Fahim, decent, 3 overs 22 for 1. Ramiz Jr., the pick of the bowlers, 4 overs 29 for 2, picking up 2 crucial wickets. Sanullah making his comeback, and Irshad, 3 overs 26 for none. And it's 148, and ABL Stallions in a position to launch. And by the look of it, it seems like we might not see Sanullah. They've been cautious using him because it will be Sameen Gul to bowl the 18th over. And it's maybe the right approach. They've seen him for a couple of overs. Just only for 1. So it's important, Salman. He's making a comeback. They just used him for 2 overs. Don't overburden him. Well, short spells, just ease him in. And he also got to understand that he can't go the full Monty straight away. Just ease in. It's all right to be aggressive, to have the instinct, which is natural. But then you have to take precautions. And I think the management, we expect the management to be smart enough. 68 run the partnership. Oh, that's fantastic. That is a great hit from Mohsin. Clearing his front leg and smacking it through extra cover for 4. Yes, Mohsin showing a set of skills as he's now settled, and I'm sure the nerves would be settled as well. He has a reasonable score under his belt and a chance to show his range. Strong boy and a strong shot. No chance for any fielder, and a good cricket shot above all. 150 up for the Stallions. Just slapped that one for 1. Looks good. Mohsin, 45, he's moved on to an important inning, as you said, for himself. And all the IPSL gurus will be having a look at this tournament, finding new talent. Here's another one, who's Mohsin, especially in the middle order, Salman. So important. It's a position which is always open for good players, because recently Pakistan has been looking for guys who are, good enough to come in and strong enough to hit the big ball, and with a reasonable technique as well. As Hussain Talat slashes this one, and it's in the gap, and he continues his brilliant form, and he continues to make runs for himself and for his team, and push his case too, because he's somebody who's been pretty consistent across formats in the last couple of years, and he has been looking good and better and better. Yeah, width given. Well, all in with that shot. Great swing also. He's not happy with the field, his effort maybe. Better effort was required according to him. But it's all working for Hussain and Mohsin at the moment. The dealing in boundaries, and with last 3.2 overs, they've got the license to thrill. Slower one picked up. Looking for 2. Umar Amin misses it. A clean pickup would have made things interesting. Yeah, but the good thing was that Mohsin's sprint and turning back was ultra quick, and he was always, leading Hussain in that couple of runs. So good intent from
both the batters, even in the running, you can see the intent, which is to get as many as they can. Just have a look at this. Have a look at Mohsin charged. Hussain hasn't completed. He is already halfway back. So this is good. Once again, this should be another couple. And this should be an easy one, because the fielders were on the boundary. And that will end over number 18, which cost 14 runs. And it's Allied Bank Stallions 160 for 3. That's a great partnership. 43 deliveries for 81 runs and equal contributions. 17 ball 32 for Hussain. 26 deliveries for 45 by Mohsin. Wonderful. Yes, and a very important aspect of this partnership has been calculated stroke making. Lesser risk involved, and they're closing in on the 200 strike rate for the partnership. 81 runs of 43 deliveries. There it is. This is the way how both of them went about the business. Hussain playing the ramp shots, Mohsin playing the big balls. Then again a reverse lap from Hussain, and this one was a 6 off the back foot. And then a full toss, which was dispatched towards fine leg. And then a strong pull stroke, which is also something that is not very commonly seen. A great range of shots shown by Hussain and Mohsin. They were off to a good start. Yasir and Maz scoring 36 and 23 respectively. Then Haris went cheaply, but that was a peach of a delivery by Ramiz Jr. A dream delivery for a leg spinner, getting a couple of wickets, Ramiz Jr. and one for Fahim. 162 for 3. Right, it has been a struggle for the new ball bowlers, especially Samin and Qasim. Economy on the higher side. Fahim Ashraf steady in the middle with 1 wicket for 22 runs. But the pick of the bowlers definitely was Ramiz Jr. getting a couple of wickets for 29 runs. Ehsanullah and Salman Irshad, the X factor in the bowling lineup, wicketless. As 18 overs gone, they're 162 for 3 Stallions. A bit of a delay in the middle at the moment. Bit of a work to be done with the batters. Physio in. That gives us the opportunity to have a look at Barrier Town, who goes global. Barrier Town Properties to develop a world-class gated community in Dubai South. It's a nice day to play cricket. There's breeze, nice breeze going on. Sun is out, bright, clear. Bit chill in the air too. So overall a great day for cricket. Just to enjoy the weather and play some quality cricket. Right, Salman, last 5 overs. 12.8 the run rate for these two. Yes, in the last 5 overs, it's been a run fest. The partnership has put more pressure on the bowlers, and they've extracted decent dividends. 12.8, nearly 13 per over, 64, and without the loss of any wicket. So all to like about this partnership. And now is a chance, if they have another good couple of last overs, maybe they can get to 190 or maybe even close to 200. Only time will tell. And Mohsin's 50 would be very valuable for himself and his team, and also very important one in terms of giving confidence to a young player who's had this kind of opportunity. And also the management is to be appreciated for trusting his ability and allowing him to bat midway through in the innings. Remember, Shoaib Malik is sitting out, and there's Taimur also. As many as 8 sixes been hit, mostly by these two, by the way, to go with 12 boundaries.
Salman Irshad for his last over. He's had a couple of difficult days. Oh, that's picked up beautifully. Fielder can't get it. Over the head of Herrera for 6. Another one for Mohsin as he brings up his 50. What a knock. That has been a magnificent 50 from Mohsin. Much deserved applaud from the management and everyone at the ground because he has played a beautiful inning. Wonderful, absolutely fantastic from Mohsin. His first 50 comes up in great style. A 6 over long on, 51 of 27. A testimony of his talent. And this is what pressure can do to any fast bowler. Known to bowl well in the death, Salman falters over here. He knows that the slightest of errors in line and length is something that the batters are taking advantage of. 5 runs to the total and a ball to be re-bowled. Well on their way towards 200, this team. The umpires again taking the option to ask the third umpire. Checking if this ball is high enough to be called a no ball, and it might be, but it has to be seen from the square leg angle. Salman bowls way behind the crease. And this is the perfect angle, and definitely it is above the waistline. So it is very clear from this angle, and we shall wait for the umpire's decision. Imtiaz Iqbal, the third umpire, in action. No ball given. As Salman suggested, it was way above the waistline, and bias given. Yes, that's what I was hoping and thinking. Decided it late that it was bias, and free hit also signaled. So he's got the license, Mohsin. This was a better delivery, tailing in, and Mohsin going hard at it. Although he might have been better off flicking it because the fine leg is up in the circle, but then it's a free hit. You want to maximize, and that is how modern cricketer thinks like. That's what I wanted to ask you. What is the mindset when facing a free hit? Yes, you know that you cannot get out, but the risk is always involved in T20 cricket. You always play a risky inning in this T20, in this format especially. But Mohsin has been brilliant. 4 sixes and 4 fours. Strike rate of 175. This is better by Salman Irshad. But Mohsin has been brilliant. The range that he has shown. Coming back to the same question, Salman, what's the mindset when facing a free hit? Well, it may be something that differs from batter to batter. For me, and this is Mohsin, who is the most important man at the moment, and his big hitting ability, the arc is all over. Pulling bowlers, spinners, fast bowlers, hitting through the covers, hitting a straight 6 over long on with a strong base. And this one is again a good delivery, a good yorker. So good little comeback from Salman Irshad. So another interesting aspect of Mohsin's hitting is, if we can have a look at him again when he hit that 6 or maybe his 6s, that the base is strong, the feet are firmly placed, and that is very important technically. The technical part of big hitting is that you should have a strong base, and just have a look at both those feet planted, and as the arm swings, the rest of the body is stable, and that is due to his strong physique as well. He's a strongly built boy. Another boundary. Hussain Talat gets to another 50. 50 of 30 balls. He has been Mr. Fantastic for Allied Bank Stallions. Somebody who's been consistent and playing with a fantastic strike rate and making his case for a comeback stronger and stronger. Absolutely. He's been consistent in last 4 innings. This is third 50 plus runs for him. So he's showing some class and form. 250s and 100 to his name.
Brilliant. He's bowled good deliveries in patches. Salman Irshad, as he ends his quota of bowling, 4 overs, 37 runs. 19 done, 178 for 3. .97-run partnership. Both the batters are all set so the last over that will be bowled by Fahim Ashraf, who's bowled well in this inning. He's given away 22 runs, a wicket. It's a very important match or the game because the boys are in the house. Mr. Azhar Ali on the left, Mr. Asad Shafiq on the right. The two selectors keeping an eye on these boys. And they surely will be having an eye on somebody like Mohsin Salman, who's strongly built and has good technique to power hitting and can construct his inning too. Yes, it's a sort of an item which is the necessity of modern white ball cricket. That middle order, you need people who can go big and also have the technique to play the situation. And it is a rarity in our cricketing fraternity. We are looking for people like that, and if this is a good option, then so be it. Third, fine leg, both up in the circle. That's good bowling. In the block hole, Obika for direct hit. Not to be. An extra run given. Was there a need of it? That's the question. The partnership moves to 99 of 51 bowls. And Fahim Ashraf there, well, he thought he had the opportunity for a direct hit run out. In the end, he wouldn't be happy. But it doesn't make any difference. Both batters are batting on 50, well set. So whoever is facing is equally dangerous. This one will go over third. And the fielder over there does a good job. Couple of runs for Mohsin. 100 partnership comes up. And 180 plus is Stallions now. And this is what they would be looking at when they started to bat for this innings and definitely put in to bat first. This is something that Engro Dolphins would not have thought would be the case. Great effort by the fielder over there. Yeah, it's just not worked for Engro Dolphins in the tournament so far. Whether they have batted first or bowled first, it's just not gone their way. That's a wide. Surely is a wide. Looking to ball away from him, because he knows that Mohsin is all set to hit a big one. He comes in a good position, gets set early. They've complemented each other brilliantly, both Hussain and Mohsin. A left-hander and a right-hander. Both power hitters, both very fit. They run well too. Not to forget the importance of running between the wickets, Salman. It's been very important not to let the pressure get to you. Absolutely. Another delivery which was well bowled. A Yorker, giving nothing away to the batters to get under it and hit the big ball. And Mr. Umar Amin on your screens, somebody who scored loads of runs in the last 3 years across formats. But in this tournament, we're waiting to see him flourish with a big one. And his team, Engro Dolphin, they need him to fire big runs. He's launched that one for a 6. That's brilliant by Hussain Talat. Fantastic hitting. Clean, proper hitting. He's getting better and better.
Hussain Talat it is. Another 6. 190 is Stallions now. And the partnership gets to 109. And 200 strike rate for this partnership. And this innings tally of 6s moves to 10, which is a good number. As this last delivery comes in. This is well bowled, and Hussain has been looking back. So this is the last delivery of the innings. I don't know what and why Hussain was looking back, because there was a run to be had, certainly. But in the end, it will be a run out, and the partnership is broken on the last ball. 109 they got of 55 deliveries. The 20-over innings ends, and Allied Bank Stallions make a huge score, 190 for 4 in the end. Yeah, maybe Hussain Talat was hoping for a wide delivery because it was bowled way outside the off stump. Look at this. Yeah, maybe he was expecting, but he went after it, went too close to it. He was never going to get a wide out of this. Mohsin in search of every run, playing for the team just to add one more run to the total, ends up getting run out, but that doesn't matter because they have had a fantastic partnership of 109 to give a very stable, very good total for Allied Bank Stallions to get to 190. The deserving standing ovation for both the batters. They've been magnificent. Haris will be a happy man at this time. Last 4 overs costing 52 to the Engro Dolphins, and I think that Allied Bank Stallions would be very happy with this total. Hussain Talat, another magnificent 57 runs. Mr. Consistent is right at the top of the scoring chart. Mohsin is the highlight of the innings because middle order is a vulnerable place, and there if you find a good talent, it's great to see. He scored 55 of 32, was run out on the last delivery. The openers Maaz and Yasir. Maaz once again playing well, and Yasir getting set and getting out. Haris came in, hit a big one, and then he was bowled by Ramiz with a wonderful delivery. So 190 it is, and 191 to get for the Engro Dolphins. The bowling charts, nothing much of mention over there. Sameen 4 overs 37 for none. Qasim 2 overs very expensive 29 for no loss, for no wicket. Fahim 4 overs 34 for 1. Decent job in the end. Ramiz was the pick of the bowlers, 29 for 2 of his quota. Hassan easing in 2 overs for 19, and Salman Irshad 4 overs 37 for no wickets. Right, Mohammad Mohsin, the star of the show, scored 55 runs, deserves to be heard. He's out there with Marina Iqbal. Yeah, I've got the star of the first innings, Mohsin, with me. Mohsin, शानदार innings थी. पहले थोड़ा सा conditions के बारे में बताएं, pitch कैसा behave कर रहा था? पिच जो है वो थोड़ा सा स्लो है. ऑफ द पिच जो बॉल आता है थोड़ा सा स्लो आता है, तो बैट्समैन जब नया जाता है तो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है खेलने में. कुछ अरसे बाद देखा कि इतनी कमांडिंग और क्लियर इनिंग्स नजर आई आपकी तरफ से. क्या काम करते रहे ऑफ द सीजन? असली ऑफ द सीज़न जो है मेरा नंबर भी यही है, मिडल में खेलता हूँ. तो क्लब क्रिकेट अच्छी खेली है, लाहौर से हूँ, तो वहाँ पे अच्छी क्लब क्रिकेट खेलने की वजह से मेरे ख्याल से ये सिलसिला. और किन एरियाज में स्पेशली T20 पे आप अपने आप को बैक करते हैं? कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेंथ एरियाज? मेरा जो स्ट्रेंथ एरिया है वो सामने है और इधर है मिड विकेट की तरफ, और यही मेरा बेस्ट एरिया है. अच्छा, इस सरफेस पे ये टोटल आपको लगता है कि इजीली डिफेंड कर लेंगे? जी बिल्कुल, हमारी जैसे बॉलिंग है, बॉलिंग स्ट्रेंथ है, और जिस तरह से फील्डिंग हमारा अच्छा कर रही है, तो इंशाल्लाह होप. चलिए, कांग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर द गेम. Well, that's it, and back to you guys in the com box. Magnificent. Mohammad Mohsin, 55 of 32 deliveries. Good interview too. Seems like a brave man, brave boy, strong man. Let's have a look at the highlights of the inning. 190 runs ABL Stallions scored. They were off to a good start, courtesy to Yasir Khan and Ma Sadakat. It was not easy early on. The ball was doing a bit, but they took their time, and then when they were set in, they had their strokes on their way. Ma Sadakat, the very talented, and that huge 6, and then an unfortunate decision not going in his way, lost his wicket. The runs kept coming. There were some big hits that came, and that delivery has to be the delivery of the tournament so far.
from Ramiz Jr. Just beaten all ends up. Hussain Talat carrying his form and continuing his merry waves when came Mohsin. Yes, this is how the catch was taken by Salman Irshad, and then came in Mohsin, and then it was the partnership that stole the show. It was Hussain Talat and Mohsin showing their team the way to bat in the middle order, and to others as well, hitting big sixes, running well between the wickets, playing all around the ground, shots through covers, over long on, long off, and this was a straight six to get to his 50. Wonderful to see that, and the stability that he brings while playing the big shots is phenomenal to see. Hussain Talat, well, he's made use of his form brilliantly. Another 50 plus score of not out, and also hitting the big ball towards the end, and then trying a cheeky one, but Fahim Ashraf was smart enough to bowl it away from the off stump, and getting a run out of the last delivery. Target 191 for the Engro Dolphins, and now it's their time to just get the runs. So it's a break, and we shall see you as the next inning commences. The split given, and welcome to 5 Mars with a boundary. हाँ, आउट करार दे दिया गया और शानदार शॉट इस बार मिड विकेट के ऊपर। ओह, शानदार डिलीवरी, बेबस हो गए हारिस। एक और शॉट बेदर्दी के साथ खेला मोहसिन ने। Hussain Talat slashes this one, and it's in the gap.
Very warm welcome back to Rawalpindi Cricket Stadium. Allied Bank Stallions taking on Engro Dolphins. The Dolphins will require 191 to get their first victory of the tournament. On a bright sunny morning, this was Allied Bank Stallions' batting effort. A good start through Yasir and Maz. Haris went early, but then this partnership between Hussain Talat and Mohsin really propelled them, putting a lot of pressure on Engro Dolphins' bowlers, who capitulated under that pressure. 190 for 4 was the result. The partnership, after the fall of third wicket, Mohsin was belligerent. Hussain Talat, his usual self, plenty of innovation. But then Mohsin, he really used the power game. There was a lot of loose stuff around as well. Salman Irshad once again not at his very best. Hussain Talat getting his second 50 of the tournament to go with that 100 earlier. But Mohsin was the main man who started, and then Hussain Talat joined in. This is his second 50 of the tournament. What a wonderful knock. And what a beautiful day here in Rawalpindi. But Engro Dolphins bowlers, they are not enjoying the sunshine. 2 wickets for Ramiz Jr. He was the pick. Plenty of runs otherwise, with high economy rates as well. Target 191, and settled alongside me into her seat, former Pakistan international Marina Iqbal. Very good afternoon, Marina. Good afternoon to you as well, Shah Faisal, and to everyone who has joined us for some live action. 191, courtesy to a brilliant partnership between Mohsin and Hussain Talat. Engro Dolphins, yeah, they did start it well, but couldn't really keep the pressure on and leaked a lot of runs because of their poor discipline in bowling. They have a huge task ahead of them, still searching for the first win of this tournament. Well, they would have done exceedingly well if they were able to get to that 191. They would need some inspiration from their senior players. Sabzada Farhan, who looked good. Tahir Beg also found some form. Umar Amin, Qasim Akram, Hurera. There's no shortage of talent and potential in that lineup, and experience. The important thing is to go ahead and do the job on a given day. Sabzada Farhan's role will be very crucial. He's in a good nick. We saw the other day scoring 52. Found some form and timing. Strike rate 127. Averaging 29.9. He will be the key, especially in this power play, and they need to utilize it. Tahir Beg also one to look out for. Just 250s, a healthy strike rate and average as well. Need to keep a positive intent. Don't look at the big total altogether, just divide them in phases. Power play to start off with. Well, Mehran Mumtaz making his first appearance in the championship. 21 years of age, very promising young spinner. 25 wickets in this format. Did you expect that, Marina? Well, given the sort of reputation he has, and I think there is definite purchase on this surface to keep things tighter and make things difficult for Engro Dolphins. I think it is a good move, especially against Farhan. Off the mark straight away. Sabzada Farhan. Tahir Beg also looked good yesterday. They will have to be at their best. Simply getting 20s and 30s wouldn't do it, especially at the rate that they scored yesterday. Run a ball
in power play is not the order of the day. Yeah, they leaked way too many runs, 52 in last 4 overs. And they'll have to do some damage control. If you look at the wicket now, I said it's one of those days where it's slightly warmer. Probably it would be at their best. So Engro Dolphins, who won the toss and put Stallions in, probably they have their best chance to get off to a good start and put pressure back on Stallions. Deep square leg. And also long off. Got 2 men patrolling the boundary. Need to keep rotating the strike. That's gone straight up, and man under the ball with the gloves is Taimur. Takes the catch, and Mirza Tahir Beg will have an early exit. Mehran Mumtaz makes immediate impact. That's a poor shot. They had the protection down towards the leg side area. The ball wasn't turning. It did skid on. There was an easy single on offer down the ground. Just forcing the shot. It was too fuller to play that slog sweep. Ballooned it up, an easy catch in the end for Haris. Mehran strikes. The change has worked for Elite Bank Stallions. Mirza Tahir Beg gone on not. 1 down for Engro Dolphins on 1. Not a cloud in the sky, but plenty of dark clouds hanging on the future of Engro Dolphins in this tournament. Already 3 defeats, chasing a mammoth target, and now an early wicket. Herrera wouldn't mind though, coming nice and early. He's a prolific red ball opener. Average of 30, strike rate of 130. Not bad figures at all. Just 22, and he's been around for a while. Herrera has the ability to steer the innings with Farhan. On the other end, he would love to take chances, but what a start for Farhan. First over picked up his first wicket of the tournament. No slips. He got tight ring around Herrera. Crunched it. Haris, I think, feeling the pinch because he's used to having gloves. But this is the dismissal. Very, very ordinary stroke. And Mehran is all pumped up. This is short, wide, and put away in style. Herrera gets off the mark, closes out the over with the boundary. Engro Dolphins 5 for 1. Absolutely gorgeous, the weather. Ubad Shah yet to take a wicket in this format. Full of potential, full of promise. Given another opportunity. He looked very good earlier in the season in the 50 over format.
He's able to bowl quick and get movement. Watch out for that away swinger. Won't get anything from that line though. Starts off with a wide. And potential is there. I've seen him also in the under-19 World Cup. Has a lot to learn from his elder brother, Naseem Shah. He's got pace, but all he needs to do is just understand that this altogether is a different level of cricket. He just need to polish himself in certain set of skills to be consistently successful. Play and a miss. It's a better line. Inviting Sabzada Farhan for that drive. Static feet. Lucky on that occasion. Yeah, he's not a huge fan of committing on the front foot. No feet movement whatsoever. He likes to have that room outside off stump with minimal footwork just to free his arms. And that's one area where you can trap him. Likes to throw the bat. Good comeback after conceding the wide from Obad Shah. Talking about the Engro Dolphins batting lineup, Marina, there's plenty of good players there. It's just they haven't clicked as a unit. I did mention a few earlier, didn't even mention Akhlaq, who's prolific on his given day. Take that. Right in the slot, and gone it went. That is Sabzada Farhan for you. That's a very dangerous length to bowl at Sabzada Farhan. He loves to stay at the crease, very stable base, and let the hands do all the talking. Asking to be hit. Obad needs to learn that this length won't work. Just slightly coming in, that helped him with that shot. Wrist coming into play. Stand and deliver for him. Change in field straight away now. You called it correctly. Stand and deliver. It's the solid base, and it was right in the slot. He still had to execute it and did it in wonderful style. Sabzada Farhan. More protection on that onside boundary now for Abad. Just the roll of the wrist for another single. Engro Dolphins need to have a good power play to keep them in the hunt, because they can't allow for that required run rate to climb up above 10 so soon in the innings. And they do have the ability. Huraira, Farhan, both are attacking batters. Any opportunity provided, they will pounce on it to make sure that they can maximize this power play. It's just about having that controlled and calculated aggression. Don't overdo it. Tucked him up. Oh, bad shot. That inward angle cramping Huraira, who generally likes to open up that offside for himself, looking for room or try to create his own. It's been a bit of a mixed bag from Obad so far. He likes to hit that hard length. He's got some serious space behind. That's why the conversation going on, and it's good to see Shoaib Malik, Haris both having a word, giving some confidence to Obad and clarity as well. It makes things easier for a youngster to understand what the plan is. Good finish to the over from Obad. Took a tumble in the process. 2 done. 14 for 1.
Mehran continuing. Straight bat from Herrera. It'll pose him a different challenge. Obviously, being an opener, you like to have pace on the ball to begin with. But this is different that Herrera will need to put up with, and Sabzada Farhan as well. Oh, he's lost control of that. It may just land safely. It does. Mas Sadakat was lurking in from that long off position. Lucky Sabzada Farhan. Yeah, just trying to back himself, go towards that mid-wicket long on area. Sliced it. You need to understand it won't be turning, and it's does skid on. Mehran with a flattened trajectory doesn't give you a lot of room to maneuver. Yeah, it's better to go with the spinner, with the tide. The ball, new ball may just skid on, may just drift in the air a little bit. Mehran is quite tall. He's got quite long fingers as well. Wrap it around the ball, and this is Herrera's area, and he finds the gap and finds the boundary. That is a beautiful shot crafted by Herrera, just giving some room to himself to free those arms. And that's a better shot, a commanding one. Have a look at that, just a shimmy down towards the leg stump, opens himself up, and inside out, exquisite shot. This one goes aerial and over the fence. Mid-on was up in the ring, and Herrera is taking Mehran Mumtaz apart. Well, he's warming up and showing Sabzada Farhan how it's done. That's a better area to target Mehran Mumtaz. Down the track, it was tossed up into the zone. And the best thing from Herrera was to play it through the line. This is turning out to be a good start despite the loss of that wicket. Both Herrera and Sabzada Farhan finding boundaries. Herrera has been sitting out the last couple of games. Played the first game. Now once again pushing it onto the onside. Coming back for the second run. And completes it very, very easily. That's good cricket. Well, there's a little discrepancy with the count of the balls. There was a dead ball in the middle somewhere where Mehran didn't even bowl. Over has been called though. 3 gone, 28 for 1. That's a top edge. It's gone up and away. Once again, luck favoring Sabzada Farhan. And the runs continue to flow. Yeah, it hurried on to Sabzada Farhan. He was tad late on that occasion to pull it. Ubad has some serious pace and it took off. But nonetheless, they'll pick up a boundary. That's what matters. Just slightly onto the front foot. And then he realized that it's a shorter one rising. Just flashes it hard to earn a boundary. Another edgy boundary. Just the one bounce. Sabzada Farhan is putting the pressure back. Just gave himself some room, and probably not where he intended, but back-to-back boundaries. Yeah, he has realized that Ubad will not take the pace off. He's bowling quickly. Just again giving himself some room to free the arms.
The intention was towards the offside, or rather down the ground, but a thick edge, it flew away. Back-to-back boundaries to start the over. Boundary check, but it was way inside the skirting. What's Subad Shah gonna do? He knows that the batters are coming after him. He may feel a bit hard done by because both these boundaries were streaky. No protection in the deep at this stage of the innings. Just the two fielders in the deep on the onside. Sabzada Farhan finding one of them, running hard. As a young bowler, it's a huge challenge to bowl to these experienced batters in this shorter format. It definitely is, because at times you think your strength is a certain area and a line, but then you have to deal with someone like Sabzada Farhan, who likes to flash. So very quickly you need to adjust, but again I think the experience around him needs to come in. He's got deep protection towards that mid-wicket area. Square can afford to go short. Just the regulation field as well. There's one square sweeper and the other one at third. Yeah, so the idea with that sort of pace Ubad has, I think Farhan is never comfortable whenever it's pitched short enough and it's quick enough. He likes to fetch that hard length into that leg side area, but he's got deep square leg. Just hit the deck hard, make sure it rises around that shoulder length, make him play that hook or pull shot. Just looking to open the face of the bat, sloppy. Yasir, I think, gives away a run. Yeah, that's sloppy. As a fielding unit, you need to back your bowler, especially when he's already under pressure. There was never a run there through the legs. In-field fielders especially, they need to cut those singles down. They need to be on their toes. In one of the earlier games, he had trouble with his spikes, kept slipping. That was regulation. There was a little bit of spin because Herrera had turned the face of the bat. Just schoolboy stuff. Once again, looking to find that gap. This is Maas Sadakat. It's a better length to finish off from a bat. 10 of the over, 4 done, 38 for 1. अच्छा जवाब अब तक दिया है 9.5 फी ओवर पर चलकर फरहान और हुरैरा ने हुरैरा टीम में वापस आए मिडिल ऑर्डर में उनकी जगह बन सकी फरहान पिछले मैच में इन रन ज़रूर बनाए थे लेकिन वो टीम के काम नहीं आए तो ये जो बैटिंग ऑर्डर है क्योंकि इस टीम में तब्दीलियां होती हुई हमने देखी हैं तो बैटिंग ऑर्डर भी तब्दील जो है वो किया जा सकता था फरहान को मिडिल ऑर्डर में आजमाया जा सकता था ताकि जो पहले 6 ओवर्स हैं और ज़्यादा उसमें रन्स के लिए ये जाते बॉलिंग में तब्दीली मोहम्मद अली आए आज इनका बॉलिंग ऑर्डर तब्दील किया गया मोहम्मद अली का कमेंट्री बॉक्स में सलमान भट्ट को खुशामदीद बहुत शुक्रिया तारिक भाई और अली इससे पहले वाले मैचेस में नया बॉल अली ने स्टार्ट किया पहला ओवर और आज थोड़ा डिफरेंट रूट लिया एंग्रो डॉल्फिन्स के अगेंस्ट लाइट बैंक स्टैलियंस ने मेहरान मुमताज़ को नए बॉल से मौका दिया और उन्होंने कामयाबी हासिल की ताहिर बेग की सूरत में पहली विकेट
जो गिरी बगैर किसी रन बनाए ताहिर बेग आउट हुए, और उसके बाद ये पार्टनरशिप अच्छी है। बहुत कन्विंसिंग शॉट्स नहीं लगे जहां मारना चाह रहे थे, बहुत सारे एजेस बाउंड्रीज की तरफ गए हैं, लेकिन एक कोशिश आपको नज़र आ रही है, क्योंकि ये टारगेट ऐसा है कि यहाँ पर रन्स बनते रहेंगे तभी आप इसकी रेस में रह सकते हैं। यहाँ पर चौके छक्के हर ओवर में एक बाउंड्री तो लाजमी है इस टोटल की चेस में। जहाँ क्योंकि आज नाकामी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती एंग्रो डॉल्फिन्स। जोरदार शॉट, इसे गिरकर रोकना चाहा कवर्स के फील्डर्स ने, लेकिन कतई यहाँ पर मोहलत नहीं मिली। शायद मेहरान मुमताज की उंगली को छूकर गेंद गई थी। काफी जगह मैसर आई फरहान को। जी हाँ, ये बॉल में जगह थी बैटर के लिए कि वो फ्रीली अपने आर्म्स को स्विंग करे, शॉर्ट एंड वाइड, और ऐसे गेंद को तो स्पेयर नहीं करेंगे। पिच अच्छा है आज धूप भी अच्छी है, तगड़ी है, और पिच में उतनी मूवमेंट देखने को नहीं मिली जो हमें पिछले मैचेस में नज़र आती रही है। साहिबजादा फरहान ने बहरहाल एक अच्छा स्कोर किया है, और उससे भी बैटर को इत्मीनान हासिल होता है अगले आने वाली इनिंग्स के लिए। तो अब इन पे जिम्मेदारी है कि अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करें और डॉल्फिन्स को कामयाबी दिलाएं। अच्छी गेंद थी। इस बार देर तक अपील करते रहे, लेकिन अंपायर जो हैं उनने इस पर बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी। आखिर में महज इशारा किया कि स्टंप्स को छोड़ती हुई चली जाती। बड़ी तेजी के साथ अंदर की तरफ मूव हुई अली की। साहबजादा फरहान अपना तवाजुन खो बैठे थे। जी हाँ, और लगता है ऐसा है कि पैड और थाई पैड के दरमियान वाली जो जगह है वहाँ पर बॉल लगा है, और ये खासा तकलीफ देह होता है। अक्सर ऐसा बॉल जब बैटर को लगता है तो फिर अगले रन्स लेने में कुछ वक्त के लिए बड़ी दुश्वारी पेश आती है। और ये देखिए, ये बड़ा एक छोटा सा गैप है, लेकिन यहाँ पर गेंद जब लगता है तो बड़ी तकलीफ होती है। जी हाँ, ये तकलीफ और बढ़ सकती थी अगर अंपायर ये फैसला बॉलर की तरफ दे देते। जी, मोहम्मद अली जो हैं वो बहुत मुसिर थे इस अपील के मामले में। तो क्या वाकई गेंद जो है ये लेग स्टंप को छोड़े जा रही थी? एक बार फिर देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो अली की जो अपील है उस पर जब आप देखें कि साहिबजादा फरहान को जब गेंद लगा है तो वो अपने टोज़ पे थे। तो एक बैटर अगर अपनी जगह से थोड़ा ऊपर जंप कर रहा है तो इसका मतलब है कि हाइट है, और पैड के ऊपर बॉल नहीं लगा, पैड से ऊपर वाले हिस्से में लगा है जो थाई और पैड के दरमियान होता है। तो शायद वो हाइट का एडवांटेज अंपायर ने साहिबजादा फरहान को दिया है। जी हाँ, लाइन से ज़्यादा लेंथ का, क्योंकि लेग स्टंप इनकी नज़र आ रही थी जब गेंद का इम्पैक्ट हुआ है। शुएब मलिक, हारिस, मोहम्मद अली, तीनों सीनियर क्रिकेटर हैं, तीनों इंटरनेशनल क्रिकेटर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। इस टीम में अच्छा तजुर्बा है, अच्छा इंतखाब किया गया है। ABL स्टैलियंस का मुतवाज़िन टीम है। हैरान कुन तौर पर पिछले टूर्नामेंट का फाइनल नहीं खेल सके थे, वनडे चैंपियनशिप का, लेकिन ये T20 में पीछे नहीं रहना चाहेंगे। इस टीम में बहुत बैलेंस है टैलेंट के दरमियान। अगर आप देखें, हर तरह की ऑप्शंस इनके पास मौजूद हैं, और एक स्पिनिंग ऑप्शन जो कि वाइट बॉल में अगर हो अच्छी आपके पास तो बड़ी करामत साबित होती है, वो उस्मान तारिक की सूरत में इस टूर्नामेंट में सामने आई है, और वो अक्सर जब ये मैच बदलते हैं तो वो एक किरदार अदा करते हैं। इस बार मिड विकेट की तरफ खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद फाइन लेग को निकल गई। 4 रन जरूर आए साहबजादा फरहान को, किस्मत ने यावरी की उनकी पूरी। आज सोच लिया फरहान ने, आज कश्तियां जलाई हैं, मार रहे हैं, चांस ले रहे हैं, और बच भी रहे हैं, रन्स भी बन रहे हैं, खुशकिस्मत रहे हैं। अब कोई इस इनिंग्स में मेरा ख्याल है ये अपने इब्तदाई रन्स के अंदर 3 से 4 बार खुशकिस्मती से बचते रहे हैं। या कल इन्होंने जो है वो काफ़ी देर तक बैटिंग की थी, लेकिन इनके रन्स टीम के काम नहीं आए थे, तो
बड़ी हद तक बात हुई होगी ड्रेसिंग रूम के अंदर कि कुछ अप्रोच को बदलने की ज़रूरत है, और भी इस बार गेंद सीधी गई, मिस फील्डिंग। इस बार 2 रन्स मिलेंगे और आज किस्मत मेहरबान है, आज जो भी कर रहे हैं वो नतीजा खेज साबित हो रहा है। इसलिए फरहान पहलवान है। देखिए आज पहलवान बनना पड़ेगा, जिस किस्म का स्कोर है आज पहलवान वाली बारी लेनी पड़ेगी। और एक दफ़ा उबैद शाह को टॉप एज हुआ इनका, जो कि कीपर के ऊपर से 4 रन्स हुए, फिर एक थर्ड मैन के ऊपर से 4 रन्स हुए, और उसके बाद ये इनसाइड एज। सो 28 रन्स जो अभी तक बने हैं उसमें 3 बाउंड्रियां वो हैं कि जो आउट भी हो सकते थे वहां पर। उनकी टीम जो है बिल्कुल 50 के दर पर है। 11 रन ओवर में बन चुके हैं। अब दोनों फील्डर्स को लेग साइड में ले लिया गया, क्योंकि अच्छी स्विंग करने में कामयाब हो रहे हैं। ऑफ द विकेट मूवमेंट इनको मिल रही है, और इस बार ये गेंद सीधी निकल गई। साहबजादा फरहान, इस बार इनके पांव जो हैं तकरीबन वहीं रह गए। 5 ओवर्स का खात्मा हुआ 49 पर 1। आगे निकलकर खेला, रन के साथ खेलते ही शॉट के साथ ही दौड़ते चले गए। अच्छी फील्डिंग की वहां पर हारिस से। मोहम्मद हारिस आज कीपिंग ग्लव्स के बगैर नजर आ रहे हैं और बड़े ही एजाइल हैं, बड़े एथलेटिक हैं। शानदार फील्डिंग उनकी तरफ से, और आखिर में थोड़ा सा पैरों से भी गेंद को पुश किया। 50 रन्स मुकम्मल हुए एंग्रो डॉल्फिन्स के। 6ठा ओवर है, पावर प्ले का आखिरी ओवर है, और ये पार्टनरशिप जो है 50 रन्स की, ये 28 गेंदों में मुकम्मल हुई। और एक ऐसी पार्टनरशिप की भी ज़रूरत है, और एक बैटर को बड़ा स्कोर करना होगा इस हदफ तक पहुंचने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक विकेट और गिर जाएगी, या मिस कर गए हैं। ये बड़ा करीबी मामला था, शायद अनलकी रहे बॉलर कि विकेट कीपर जो है कलेक्ट नहीं कर सके। पहले बॉल को थोड़ा सा फंबल किया, जिसके नतीजे में हुरैरा वापस आए हैं, और इस तरह के चांसेस जो हैं ये मैच को तब्दील कर सकते हैं। यहाँ गेंद ज्यादा बाउंस हो गई थी, और उसके बाद इनके हाथों में ये आ गई थी गेंद दोबारा, लेकिन क्या बल्ला वापस आ गया उस वक्त तक? लगता है कि आ गया था। यहाँ क्योंकि अगर ये पहली कलेक्शन क्लीन होती तो वहाँ फिर ये विकेट मिल जानी थी। ये अच्छी बॉलिंग थी यहाँ मेहरान मुमताज़ की जानिब से, खुशनसीबी बैट्समैन की। अभी तक किस्मत वाकई मेहरबान लग रही है यहाँ एंग्रो डॉल्फिन्स पे। आज अच्छा स्पेल किया था पहले हाफ में रमीज जूनियर ने। यहाँ पर स्पिनर्स को वो विकेटें मिलती आई हैं, ख़ास तौर पर जो बाएं हाथ के फिंगर स्पिनर्स हैं उनने अपनी धाक बिठाई है। रावलपिंडी में आमतौर पर जो स्पिनर्स हैं उनके लिए आसान नहीं होता। ये आसान शॉट साबित हुआ, गेंद आगे गिरी, पहले से ही तैयार थे, और साहबजादा फरहान ने मिड विकेट के ऊपर अच्छा हाथ दिखाया। ये गेंद थोड़ी सी आगे गिरी बैटर के करीब, और आसानी से उन्होंने इसको खेल दिया मिड ऑन के ऊपर से, जो कि दायरे में फील्डर हो तो फिर एक और आसानी होती है बैटर के लिए।
अब फील्डिंग में तब्दीली हो रही है। मिड ऑन की जगह लॉन्ग ऑन पोजीशन पोस्ट कर दी गई है और मिड ऑफ को दायरे में ले लिया गया है। तो अब देखना होगा कि क्या साहिबजादा फरहान इनसाइड आउट खेलते हैं। देखिए कोशिश की और ये अगर गुजर गया तो 4 रन हो सकते हैं, लेकिन शुएब मलिक जो कि खासे तेज हैं, लेकिन लगता है जैसे थोड़ा सा मसल पुल कर बैठे हैं इस गेंद को पकड़ने के लिए। 6 ओवर्स का खेल मुकम्मल और एंग्रो डॉल्फिन्स 57 एक विकेट के नुकसान पे है। ये देखिए ये पावर प्ले में जो अभी तक हुआ, ताहिर बेग बड़ी हिट लगाना चाहते थे और टॉप एज जिसको आसानी से कीपर ने पकड़ा, और उसके बाद ये अच्छी पार्टनरशिप जिसमें कुछ बहुत शानदार स्ट्रोक्स और हुरैरा और साहिबजादा फरहान दोनों चांसेस लेते रहे। किस्मत भी मेहरबान रही और उन्हें ज़रूरत है, इस टोटल को आराम से तो खेल नहीं सकते, इसमें बड़े शॉट्स लगाने पड़ेंगे। और साहिबजादा फरहान पिछले मैच में रन्स बनाने के बाद काफ़ी कॉन्फिडेंस फील कर रहे होंगे। और ये दूसरे पावर प्ले का इशारा अंपायर मोहम्मद आसिफ की तरफ से। इक्कीस पर हुरैरा हैं, 35 रन बनाए हैं साहिबजादा फरहान ने। उस्मान तारिक जो हैं अभी तक इनकी बॉलिंग एक पहली बनी रही है। यहाँ मिडल ऑर्डर और सेट बल्लेबाजों के लिए भी पिच से बाउंस मिलता रहा है। मुख्तलिफ वैरायटीज़ हैं जिस पर कारगर साबित हुए हैं। फुल शॉट खेला लेकिन बाउंड्री पर है निगहबानी, एक ही रन बनेगा। उस्मान तारिक एक तो मिस्ट्री स्पिनर है, उसको कई दफ़ा बैटर्स को समझने में थोड़ा वक्त लगता है, और दूसरा ये जो अपने रनअप के अंदर एक पॉज लेते हैं वो अनसेटलिंग है बैटर्स के लिए। ये देखिए और ये बहुत क्लोज कॉल और बाल बच रहे हैं। साहिबजादा फरहान पे आज किस्मत काफ़ी मेहरबान है। जहाँ और इस बार अंपायर का यही ख्याल था कि गेंद बल्ले से लगी है पैड पर आने से पहले। जहाँ ये बाल बचे हैं, अंपायर ने इशारा दे दिया था कि ये प्लेड एंड लगता है ऐसा कि पैड पहले लगी, पैड पर पहले लगी। ये दिलचस्प होगा यहाँ ये फिर से देखना इस मंजर को। साहिबजादा फरहान को बिल्कुल पता नहीं लगा और इस मनाजर से, इन मनाजर से यही लगता है कि गेंद पहले पैड को छू कर गया फिर बैट को लगा। जी अंपायर ने ये इशारा किया था कि गेंद बल्ले पर लगी है, लेकिन ये पिछले पैड पर लगने के बाद लगी है। स्पिनर्स जो हैं उन परेशानियां पैदा करना शुरू कर दी हैं दोनों एंड से। ये बहुत ही वाज़े है कि बैटर्स समझ नहीं पा रहे हैं उस्मान तारिक की बॉल किस तरफ जाएगी, और यही वजह है कि वो अपने शॉट में लेट नज़र आते हैं। इस बार गेंद लेग स्टंप से बाहर, इसको आसानी से प्लेस किया, सिर्फ एक ही रन बनेगा, लेकिन उस्मान तारिक के आने से ब्रेकें लग जाती हैं बैटर्स की और विकेट्स भी लेते हैं। यहाँ पर इकॉनमी रेट इनका बहुत अच्छा है और टीम्स का रन रेट ऊपर चला जाता है चेस में। अच्छा ओवर उन्होंने बिल्कुल खामोश रखा। सिर्फ 4 रन्स के साथ उस्मान के पहले ओवर का खात्मा हुआ 62 पर 1। बड़ा दिलचस्प मुकाबला इस वक्त हो रहा है। यहाँ दोनों टीमों के दरमियान इस वक्त फर्क ना होने के बराबर है।
9 विकेटें हाथ में हैं एंग्रो डॉल्फिन्स की टीम जो है, देखना चाहिए कि उसके आसाब कितने मजबूत हैं आगे चलकर। 2 सेट बल्लेबाज हैं और ये मैच जो है यहाँ से इनके लिए जीतना भी बहुत ज़रूरी है। कासिम अकरम, उमर अमीन, मोहम्मद अखलाक को आना है खेलने के लिए। अखलाक अच्छे हिटर हैं। अच्छे क्रिकेटर हैं। मेहरान मुमताज़ रावलपिंडी से ही आते हैं। पाकिस्तान ए की भी इस बरस इन्होंने नुमाइंदगी की है, पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड में भी थे। जी हाँ, यंग टैलेंट हैं और अच्छी परफॉर्मेंसेस रीसेंट क्रिकेट में जो इन्होंने खेली है। यहाँ पे भी एक अच्छा बॉलिंग स्पेल कर रहे हैं। आसान नहीं है इस पिच पे फिंगर स्पिनर्स के लिए मैनेज करना, लेकिन इन्होंने अच्छी बॉलिंग की, एक विकेट भी हासिल की ताहिर बेग की सूरत में। और इन दिनों ये जो है एक दिली खुशी भी होती है इस सीज़न में, जो हालात और जो जिस तरह की विकेटें उन्होंने देखी हैं टेस्ट क्रिकेट में। और ये विकेट देख ली उन्होंने T20 में भी। मेहरान की इस गेंद को खड़े खड़े ड्राइव करने गए, हुरैरा विकेट कीपर को कैच दे गए। इस बार अच्छा कलेक्ट किया तैमूर ने विकेटों के पीछे। आखिरकार किस्मत ने भी मुंह मोड़ा है और इस बार जो है एक अच्छा कैच, ये मुश्किल कैच होता है कीपर के लिए, स्पेशली अगर कीपर जो है वो रेगुलर ना हो। ये देखिए फ्रंट फुट को चेक किया और ये शॉट हुरैरा बिल्कुल अपने हाथों के साथ इसको प्लेस करना चाह रहे थे। पैर जो है वो गेंद के करीब नहीं गया, थोड़ा सा बॉल टर्न हुआ और एक अच्छा कैच। हुरैरा 24 रन बनाए और एंग्रो डॉल्फिन्स 2 विकेट के नुकसान पर 65 रन। कासिम अकरम को आज जल्दी उतारा है मैदान में और शायद ये स्पिनर्स के ही खिलाफ एक जवाब हो सकता है बड़ा। देखिए, मैं इस बात को बिलीव करता हूं कि अगर आप एक स्पेशलिस्ट हैं किसी भी चीज़ में तो आपका एक नंबर होता है। हम देखते हैं कि हमारी बैटिंग ऑर्डर्स में बहुत ज़्यादा तब्दीलियां, और कई दफ़ा बैटर्स को पूछें तो वो अपने नंबर की बजाय अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का इजहार करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि क्रिकेट एक स्पेशलिस्ट की गेम है। आप किसी भी फॉर्मेट में हो, आपका एक स्पेसिफिक रोल होता है। तो जितने अरसे से ये प्लेयर्स, यंग प्लेयर्स इस क्रिकेट को खेल रहे हैं, ए टीम में खेल रहे हैं, जो है सूबाई या शहरी सतह पर या इन 5 टीमों में, तो इनकी कोई रोल की एक स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। ये नहीं कि एक दिन आप 7वें पे खेल रहे हैं, एक दिन तीसरे पे खेल रहे हैं, एक दिन चौथे पे खेल रहे हैं। तो ऐसे तो आपके इर्द गिर्द वाले भी सभी लोग चुकन्ना रहना पड़ता है उन्हें कि पता नहीं आज क्या करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है टीम्स के लिए भी जब आपकी प्लानिंग आसान होती है, जब आपको अपने प्लेयर्स के रोल्स पता हो। जी हाँ, ज़ाहिर है कि ये जिम्मेदारी ड्रेसिंग रूम की सबसे पहले है। यानी नदीम खान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर हैं, उनके हमरा ये 2 नेशनल सेलेक्टर्स हैं, अजहर और असद। देखिए ड्राइव करने चले गए स्पिनर के खिलाफ, जो है गेंद स्किड करती हुई निकल गई। अच्छा कैच, उम्दा स्पेल किया यहाँ पर, क्योंकि 4 में से 3 ओवर्स इन पावर प्ले में किए थे मेहरान। उसके बावजूद इनके जो हिंसे हैं वो काबिल दीद हैं। अभी जो आपने बात की बैटिंग ऑर्डर में नंबर की, कई खिलाड़ी जब नए आते हैं ज़्यादा नर्म होते हैं और कई बार उन्हें एहसास होता है कि अगर वो खुद को वो लचक में रखेंगे तो शायद कप्तान ज़्यादा पसंद करेगा। इस बात हमारे यहाँ ये कुछ ज़्यादा ही होता है।
अगर आपको याद पड़ता हो तो इफ्तिखार अहमद जब डोमेस्टिक क्रिकेट में आए तो इनकी जो सेंचुरियां हैं वो ओपनिंग स्लॉट पे थी। जब पाकिस्तान टीम में आए तो वो 6वें नंबर के प्लेयर बन गए। और इसी तरह रिजवान जब मिडिल ऑर्डर के प्लेयर थे वो ओपनिंग पोजीशन पे आए। 8 ओवर्स का अख्ताम और 66 पे 2। Couple of wickets for Mehran Mumtaz, giving away 32 runs. Ubaid Ali and Usman wicketless so far. 66 for 2 after 8 overs. Just 4 bowlers used so far. 125 runs required of 72 deliveries. Run rate required 10.42. And they're in. They're playing next. Shadab Khan, Saklain Mushtaq. Mas Sadakat has been brought in. Left arm spin. A very good all-rounder in prospect. Shah Faisal. There is something about him. Something very likable about him. Indeed it is. His attitude is fantastic, and just look at that age. That's a big one. That's some way to welcome a new bowler. That's Qasim Akram. Just came in with the positive intent, and that's the sort of inning that is required from the word go. Qasim Akram must be very disappointed with his return so far in the tournament. Engro Dolphins would be relying very heavily on the prowess of him in the middle order. He has all the ability in the world to be a very good middle order batter, even at a bigger level. Starts off brilliantly. I think it's landed over the skirtings. Umpire Asif wants to have a look. He's been in the spotlight, Asif, today, to make quite a few calls, and this one he's relying on the help from his colleague, third umpire Imtiaz Iqbal will be making the call on this one. I don't think it should take any longer than it has already, because it's landing outside of the skirtings. Six signaled. Right decision being made by the TV umpire. Qasim Akram has come out with an intent. He's using his feet. Reverses this time, but straight to the fielder, who does well. That's Haris, the captain, there at the hot spot. He's putting his body on the line. Well, Qasim rather, is playing a shorter ball. And again, the intent is quite clear. He's got the license to, with run rate creeping up to 10.35, that's required, I say. So he's got that license that he can go after bowling from the word go. It's definitely hard to falter any batter for being aggressive or ultra aggressive, but then you got to have some wits about it. We'll come back for the second run. Sabzada Farhan is struggling, but the throw was slightly weaker. It's okay to be aggressive. You got to still choose the right options. You still have to target the right areas for the right deliveries. Absolutely. Looking for two, is might not be able to get that because Mohammad Ali hurried onto the ball and denied the second run. 9 done, 76 for 2.
Would they be worried, Shah Faisal? They've got a meeting going on with Shoaib Malik, the senior member, the mentor involved, Usman Tariq and the captain Haris. With run rate required 10.45, there's no need to press that panic button at the moment. I'm not sure it was panic, probably some kind of strategy looking ahead to the overs remaining and the resources remaining, how they want to plan their remaining overs, who's going to bowl when. Probably a little meeting, and obviously Shoaib Malik's brains will have to come into that. And very important about the remaining overs of this man, Usman Tariq. You want to use him sparingly, build pressure, and then held him back for something. Oh, he's drilled that one straight for 4. That's one way of doing it. Against Usman Tariq, clears his front leg, hit it straight. That's a good boundary early on in the over. That will put Usman under pressure. That lengthy pause, but look at how Sabzada Farhan was prepared to wait. He waited, and then smacked it. Earlier in the tournament, Haider Ali took Usman apart, and he had the same strategy as well. Oh, that's good. Great commitment shown by Mohammad Ali. So that sort of effort that lifts the others too. That had 4 written all over it. The tall fast bowler bringing out the big dive. If that ball passes him, that was 4. Look at the sweeper in the background. Had no chance. There's been a change in the batting order for Engro Dolphins, with the clock still to come. I think that's what we spoke about yesterday. They need to have a finisher there who can hit big sixes, big boundaries. They've got Umar Amin also in the side, Fahim Ashraf also. But having a clock down the order, that will be a help in a run chase. And remember, you made this point, Ali. Probably they were listening to you. Mentor Sarfraz. In the gap. Smartly done by Qasim. Waited, and then reversed it for 4. That's good, smart batting by Qasim Akram. On his knees was Muhammad Ali. Qasim Akram has come out and has been ultra aggressive. Pick the right line for this kind of stroke. And once he goes through this infield, there's no protection in the deep. Usman hasn't changed the field. He's throwing the challenge to Qasim again. Straighter one, quicker in pace too. You can just tell by his expressions that he almost foxed the batter. Usman Tariq, such a difficult campaigner just to pick from the hand. Yes, just throws at it. Straighter one, quicker one. That's what Qasim Akram was not expecting. Ten off the over, so they've got the run rate required in this over. Single to end the over. They'll take this. 11 runs off the mystery bowler. 10 done. 87 for 2, and it's time for all the officials and the players to have a drink break.
Right, 87 for 2. Mirza Tahir Beg and Herrera, the two batters out. Both wickets going to Mehran Mumtaz. But it's Sabzada Farhan who's still there, rock solid on 48. And a bit of flair from Qasim Akram. Started off his inning with an intent. But it was Sabzada Farhan. Just like yesterday, he started off brilliantly, was full of strokes and intent. The range that he has shown and the power in the strokes has been amazing. Even to the mystery man Usman Tariq has played that beautiful boundary down the track. But Shah Faisal, if they have to chase down the remaining 104 runs of 60 deliveries, it has to come good from Qasim Akram. He's shown so much promise. It's time to deliver and start winning games for the team. And this is the opportunity he has. Can't agree more. He has the promise, he has the potential. Slightly fallen off the rails recently, but today is a big opportunity. Come good today, and everything will be forgotten. There's no better time. There are two selectors in the ground. So you do it in front of them, make a case for yourself. The stage is set. Opportunity is there. There's lots of expectations, yes. It's time to deliver. Absolutely, and I wonder, Mentor Sarfraz, who was a prolific middle order batter himself. 50 for Sabzada Farhan, back-to-back 50s from the opener, giving his side a wonderful foundation in pursuit of a huge target. Coming at a very good rate as well, just 33 deliveries. Absolutely, rock solid, Sabzada Farhan. 6 fours and a 6. Impressive strike rate also, 151. Looks in control at the moment. But it has to come from other end. Yes, he's doing it. He's doing it in some style. Not shying away from expressing himself, Qasim Akram, showing the range he has. He's very clear in his head. That obviously helps. Got himself into good position. Allowed the front foot to get out of the line of the ball so he can swing the hands. 18 of 9, striking at 200. How long can he continue that? The longer he goes, the better for Engro Dolphins. Good cricket. Not being over aggressive. Realizing that it can be done playing normal, regular cricket. Mohsin from the first inning and Hussain Talat showed us that you know you don't have to go bizarre hitting every delivery out of the park. Down the track, straight as an arrow. Fantastic hit by Sabzada Farhan for a 6. What a way to end the over. Well, it's just landed right underneath us. 11 gone. 100 has been brought up. 101 for 2. Game on. I told you, no? Right, there is a counter-attack from both ends. Sabzada Farhan and Qasim Akram. What about this shot, Shah Faisal? Brilliant. Footwork was the key. Putting the ballers under pressure. Safest place in the ground to hit. Plenty of power. And now I think Allied Bank Stallions would really be feeling that they're in a dogfight. Berrytown Properties. Berrytown goes global. Developing a world-class gated community in Dubai South. Something really to look forward to. Mohammad Ali is back, but Qasim Akram is just toying around with the bowlers all over the ground. We've seen some excellent shots from this youngster.
Smile on his face tells everything. This is the Qasim Akram that we all hoped and expected will come good. And now he's showing that he's completely fearless. I don't disagree with his attitude and his effort. I don't think over-aggressive is a term that modern-day cricketers are used to. But you still have to have the skill to execute all these strokes with consistency. The intent is quite clear. This one definitely going down. But you do need an inspiration from Engro Dolphins as far as they're concerned. They do need a performance like a different performance, a match-winning performance from one individual. Just a while ago, I was thinking what Sarfraz would have had to say to Qasim Akram. Sarfraz himself a very good middle order batter, a master of run chase situation, probably in a different way, running hard, manipulating the gaps and the fields and finding the odd boundary. Qasim's method is exactly opposite to what Sarfraz is. But then, I'm just curious to know what would be the talk between them, because Qasim has come out all guns blazing even after the drinks break. Aggressive running, coming back for the second and completing it. That's tremendous running between these two, especially Qasim Akram. He was the one running towards the danger end, showing great commitment and fitness, this youngster. You want to change his gloves. He was flexing a little bit, doing a little stretch, but look at how quickly he turned around. An excellent technique, the way he changed the bat from one hand to the other as he was coming back. Even if Ali had collected, Qasim would have been in. He's still not up on his feet. That worries me. But so far, so good for Engro Dolphins. The partnership, 43 of just 23. That's a very important partnership for Engro Dolphins. You earlier spoke about how Sarfraz Ahmed would have spoken to Qasim Akram. I don't think so. He would have anything to say about this inning. He would just have given him the license just to go out there. The team needs a good inning from you. Express yourself. Show the world what you're made of. This is the time, the opportunity, the stage is set for you to perform. It should have been simple. No complications there. And he is doing it. It's playing with a strike rate of 200. 24 of just 12 deliveries, Faisal. So the license to thrill. Just don't know what would be the outcome of his innings, but as long as he's there in the middle, it's non-stop entertainment, that's for sure. He's put on a show so far, striking at 200 still after playing 12 deliveries. But this is the kind of youngster he is, very talented, and he will thrill on his good days. Just want his good days to come more often. Consistency, in simple words. 8 of the over so far. They had 14 runs of the previous over. So they're on the go. A little bit of a delay in the middle. I think it's sorted. Just don't throw it away. That should be the game from here on for Qasim Akram. Smart from both ends. Change in pace from Muhammad Ali and smartly handled by Qasim Akram. This has been the most impressive thing about Qasim so far. On odd occasions, he's prepared to wait for the ball. That was cleverly bowled by Muhammad Ali. Change of pace, bowling it away from the hitting arc of Qasim Akram. Qasim, who's getting ready for the big wind-up, just delayed his stroke, content to pick up a single. Very good cricket.
Nice and solid from Saibzada Farhan. A single will end the over. It's 111 for 2. अभी तक अच्छा मुकाबला हुआ है, लेकिन यहाँ अब ये जो 10 की दरकार औसत है, ये हमने देखा है डॉल्फिन्स के लिए पिछले मैचेस में भी। जब ये यहाँ से आगे निकलती है तो फिर ये खेल में पीछे रह जाते हैं। इसलिए बड़ा शॉट लगाने गए थे और वहाँ पर ले लिया कैच मोहम्मद अली ने। कुछ देर के लिए उन्हें मुश्किल हुई, लेकिन खासा लो गए। आखिर को उस्मान को तीसरे ओवर तक इंतजार करना पड़ा अपनी पहली कामयाबी के लिए। स्पिन की तवक्को कर रहे थे साहबजादा फरहान, उतनी मिली नहीं और ये बड़ी विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। आसान नहीं होता अटैक करना उस्मान को अगर आप उनके हाथ से पिक नहीं कर पा रहे। आइडिया ठीक था, सीधा खेलने गए थे लेकिन थोड़ा बैक फुट पे थे, इसलिए एलिवेशन तो मिली लेकिन डिस्टेंस हासिल करने में नाकाम हुए। और ये इंपॉर्टेंट विकेट है अगर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम की बात करें। अच्छी इनिंग्स खेल रहे थे साहबजादा फरहान, 80 बना के वापस 111 पे 3 एंग्रो डॉल्फिन्स। तेरहवां ओवर जारी है और आमतौर पर यही वो मरहला होता है जब एंग्रो डॉल्फिन्स जो है अपने रास्ते से हट जाती है। अच्छा आगाज इनको मिलता रहा है। उमर अमीन आए हैं, क्या आज टीम को ये 2 पॉइंट्स दिला सकते हैं? ये आखिरी मैच है इनका इस पहले राउंड का। डॉल्फिन्स जो है अभी आखिरी नंबर पर है। पहले तीनों मैचेस में शिकस्त के बाद अपने चारों मैचेस जो है वो जीते हैं। अब अपने 3 मैचेस जीते हैं दादा यूएमटी मार्कोर से, उनके 6 पॉइंट्स हैं। उन्हें आज अपना आखिरी मैच खेलना है, दूसरा मैच 3:30 बजे। अच्छी डिलीवरी, बिल्कुल भी जगह फराहम नहीं की उमर को और एक खोखली सी आवाज आई उनके बल्ले से। यहाँ पे टाइम बिल्कुल नहीं होगा उमर अमीन के पास क्योंकि रन रेट जो है वो 10 इशारिया पे पहुंच चुका है। पूरी तरह दबाव में लिया हुआ है। इस ओवर में पहली गेंद पर विकेट मिल गई। साहबजादा फरहान बैकफुट से नहीं क्लियर कर सके बाउंड्री को। मोहम्मद अली रास्ते में आ गए थे। फाइट गेंद यहाँ पर रही और इस तरह के जो बॉलर हैं वैराइटीज के अलावा आपको लाइन के मामले में भी बहुत ये तरह तरह से आते हैं, मुख्तलिफ जगहों से आते हैं उस्मान, इसलिए भी यकीन नहीं होता बैट्समैन को। एक्सपेक्ट नहीं करते बैटर के कौन सी लाइन प्रिडिक्ट नहीं कर पाता एक्चुअली। ये एक अच्छे बॉलर की निशानी है कि आप बैटर को इस गेसिंग गेम में रखें और इनके पास क्योंकि ये पॉज करते हैं तो इनकी नज़रें बैटर के फीट मूवमेंट पे भी होती है, तो इनको निकल के खेलना भी आसान नहीं क्योंकि इनके पास टाइम होता है लाइन और लेंथ एडजस्ट करने में। एक बार फिर इंतजार करना पड़ा गेंद के हाथ से निकलने का उमर अमीन को और
अभी तक वो ऑफ द मार्क नहीं हो सके। अंपायर ने उनका ये ख्याल था गेंद लगी है, ये बल्ले को उमर अमीन के अच्छी पार्टनरशिप उस्मान ने इस ओवर में तोड़ी। साहबजादा फरहान को उनने आउट किया। कल की निस्बत उनका स्ट्राइक रेट बेहतर रहा, कल सिर्फ 128 का स्ट्राइक रेट था। निस सेंचुरी जरूर स्कोर की थी, लेकिन आज वो निस्बतन बेहतर है। लेकिन फिर भी दबाव इस वक्त सारा मिडिल ऑर्डर पर है। इससे निकलने के लिए कुछ पापड़ बेलना पड़ेंगे एंग्रो डॉल्फिन्स को। 114 पर 3। साहबजादा फरहान के साथ ताहिर आए थे, ताहिर बेग, वो जल्दी चले गए। हुरैरा और कासिम अकरम उन्होंने उनका साथ दिया। सिर्फ 3 एक्स्ट्राज हैं, काफ़ी नबी तोली बॉलिंग की है यहाँ पर ABL स्टैलियंस ने। उबैद शाह वापस आए अपना तीसरा ओवर करने के लिए। नई गेंद से जो इनको 2 ओवर्स मिले थे उसमें 18 रन दिए, से लैप करने के लिए गए। इसे विकेट कीपर नहीं ले सके तैमूर, और 4 रन बन गए। ये पहला मौका नहीं है कि मेकशिफ्ट विकेट कीपर के दाएं बाएं से गेंद निकली हो। यहाँ शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि कासिम अकरम बहुत ज़्यादा शफल कर गए थे। पहले भी इन्होंने ऐसे एक बाउंड्री हासिल की है। थोड़ा सा बीच में एक पैच आया था जहाँ ब्लाइंड हो गए थे तैमूर। कीपिंग ये करते हैं, लेकिन इस बार बीट हो गए। यानी बुलाया है वहाँ हारिस ने। क्या ये विकेट कीपिंग की पोजीशन पर हारिस खुद तो नहीं आने लगे? लगता है कि वो ग्लव्स खुद पहनना चाह रहे हैं, क्योंकि ऐसा एहसास दिलाया तैमूर ने कि गेंद उनकी पोरों पर लगी है, उनकी उंगलियों पर खासी नीचे रह गई थी। बिल्कुल तासुर ऐसे ही दे रहे हैं जैसे गेंद लगी ज़रूर है, और आसान नहीं होता। एक तो सर्दियों का मौसम है, कीपर के लिए पहले ही मैंने हार्डली कोई ऐसे कीपर देखा होगा जिसकी सारी उंगलियां सही हो, सलामत हो। मुश्किल जॉब है ये कीपिंग का। हाँ, 41 गेंदों में 73 रन। इससे शायकीन खासी दिलचस्पी ले रहे हैं इस मुकाबले में। आज के दिन 2 मैचेस होना है। इसके बाद जो दूसरा मैच है उसमें UMT मार्कोर्स की टीम मैदान में आएगी पैंथर्स के सामने। ये एक अच्छा मुकाबला होगा। UMT मार्कोर टेबल टॉपर्स हैं। पैंथर्स ने थोड़ी बहुत एक फॉर्म पकड़ी ज़रूर है, लेकिन इन एंड आउट प्लेयर्स भी होते रहे हैं। शाताब खान खुद भी मेंशन कर चुके हैं कि फुली फिट नहीं है, लेकिन ये कॉन्टेस्ट अंडर लाइट्स अच्छा होगा। अभी तक ज़्यादा मुश्किलात हुई नहीं UMT मार्कोर्स को। बॉलिंग भी बैलेंस लग रही है और बैटिंग भी। और लेक सिटी पैंथर्स अच्छा प्रोग्रेशन देखने को नज़र आ रहा है। इनकी लाइनअप में भी बड़े स्टार्स हैं, कोचेस मौजूद हैं। क्राउड भी उम्मीद करते हैं कि आएंगे क्योंकि बड़े नाम हैं। इफ्तिखार अहमद, शाताब खान के फैंस काफ़ी हैं। आहिस्ता आहिस्ता तादाद बढ़नी शुरू हो गई है। खो के ठंड है लेकिन आइसक्रीम चल रही है। कासिम अकरम 26 उम्र में 1 रन अभी तक बनाया है। मोहम्मद अखलाक जो हैं आज उनको काफ़ी नीचे धकेल दिया गया। पिछले मैच में
ये आए थे शुरू में ही खेलने के लिए। और मिर्ज़ा ताहिर बेग के साथ इनकी इब्तिदा में एक अच्छी पार्टनरशिप भी हुई थी। अलबत्ता उनको अब फिनिशर के किरदार की तरफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। अखलाक और फ़हीम अशरफ दोनों जो हैं वो फिनिशर का काम कर सकते हैं। सरफराज अहमद का यही ख्याल है, जो मेंटोर हैं एंग्रो डॉल्फिन्स के। पीछे हट गए थे, इसलिए गेंद को उनसे मज़ीद दूर किया। मिस्टर सफदर यहाँ तो अब यहाँ पर जो शरह है वो 11 की ओर चली है। ये अच्छा शॉट खेल गए हैं, वो बैकफुट पर जाकर बहुत उम्दा गाइड किया। उबैद की रफ्तार काफ़ी थी इस शॉट को बाउंड्री पार ले जाने के लिए। अच्छी क्रिकेट कासिम अकरम की। अच्छी गेम अवेयरनेस है, ज़्यादा ओवर हिट करने नहीं गए। जानते हैं कि उबैद के पास वेरिएशंस कम हैं, कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आते, इसलिए पेस का इस्तेमाल करेंगे। ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद ज़रूर था, लेकिन पीछे इतना था कि हट के इसको इनफील्ड के ऊपर से खेलने में कामयाब हुए। अच्छी इनिंग्स खेलते हुए कासिम अकरम, लेकिन इनको सपोर्ट भी चाहिए दूसरे एंड से। उबैद अभी तक इस फॉर्मेट में अपने कदम नहीं जमा सके हैं, अभी तक बिल्कुल नए हैं। पहले ऑफ स्टंप के बाहर इनने वाइड की, ये भी खासी करीब थी एक और वाइड के, लेकिन क्योंकि चलते हुए आगे गए थे कासिम अकरम, इसलिए अंपायर ने ऐसा करार नहीं दिया। दो दफ़ा ये शॉट ट्राई कर चुके हैं। लेग साइड पे प्रोटेक्शन ज़रूर मौजूद है, लेकिन फिर भी ये ऐसी लेंथ है जिसको खड़े हुए अगर फ्रंट ऑफ स्क्वायर ये शॉट खेलना चाहे तो वो बेहतर सिलेक्शन होगी बजाय इस रिस्क लेने के। और शानदार शॉट इस बार लॉन्ग ऑफ की जानिब, और बड़ा छक्का लगाया। इस बार बिल्कुल ही मुख्तलिफ अंदाज इख्तियार किया। पिछले शॉट की निस्बत 180 डिग्री ये मुख्तलिफ था। जब ये ऐसी सलाहियत मौजूद है कासिम अकरम के पास, बासानी विकेट के सामने रन्स कर सकते हैं। बैकफुट पे भी अच्छा खेलते हैं। प्रेडिक्टेबल हो गए थोड़े उबैद, लेंथ में कुछ ज़्यादा तब्दीली नज़र नहीं आई, स्पेशली रफ्तार में तब्दीली नहीं कर रहे, जिसकी वजह से महंगे साबित हो रहे हैं। हल्का सा रूम दिया था थ्रू द लाइन, अच्छा फॉलो थ्रू और अच्छा बैलेंस कासिम की जानिब से। दोनों के दरमियान एक मुकाबला हो रहा है इस वक्त। इस बार बीट करने में कामयाब हुए, गेंद उस रफ्तार से नहीं पहुंची हारिस के पास, जो आ गए हैं अब विकेट कीपिंग की पोजीशन पर। लेकिन इस ओवर में दबाव में लिया है 15 रन बनाकर यहाँ कासिम अकरम ने, और मैच का जो मोमेंटम है वो आया है ज़रा सा वापस डॉल्फिन्स की जानिब। उबैद पहले भी एक्सपेंसिव साबित हुए हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस बॉलिंग देखने में नज़र ज़रूर आई है, पोटेंशियल दो मौजूद है। इस बार स्लोअर वन कराया है, ये इफेक्टिव है स्पेशली इस फॉर्मेट में और इस स्टेज पे। कासिम को बीट कर दिया, पिक नहीं कर पाए, और डॉट पे ये ओवर इख्तिताम हुआ 14 के बाद 129 पे 3।
सलाह मशवरा जारी है कि यहाँ इस वक्त किसकी तरफ जाया जाए उस्मान तारिक का, क्योंकि एक ही ओवर बाकी है। यहाँ पर मोहम्मद अली के अभी 2 ओवर्स बाकी हैं। मेहरान मुमताज़ वो पहले ही वो अपना काम कर चुके हैं। यहाँ उस्मान के साथ ही जाने का फैसला हुआ शोएब मलिक और हारिस दोनों की जानिब से। तो उबैद को अच्छा टारगेट किया, तो बड़ी समझदारी के साथ कासिम अकरम ने फिर से अच्छी डिलीवरी, बाल बाल बचे। अभी तक उमर नहीं रीड कर पाए। तो मरीना क्या यहाँ पर करना चाहिए उमर अमीन को इस ओवर में? क्या पीछे पड़ना चाहिए इन्हें स्पिनर के? यही करना चाहिए उमर अमीन को, इसी की तवक्को की जाती है इस स्टेज पे, स्पेशली उमर अमीन से। और सलाहियत रखते हैं बड़ी शॉट्स की, क्योंकि दूसरे एंड से कासिम अकरम ने अटैक जारी रखा हुआ है। लेकिन अब क्योंकि रन रेट बढ़ता जा रहा है, तवक्को ये की जाएगी कि दोनों तरफ से रन आएँ। कुछ एरियाज हैं इनके स्ट्रॉन्ग, स्पेशली मिड विकेट अच्छा खेलते हैं, बैकफुट पे कट भी करते हैं। स्लॉक स्वीप किया और स्ट्राइक रोटेट करने की भी सहलियत रखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये ज़रूरी है कि पॉजिटिव इंटेंट से खेलें। यहाँ ये बहुत अहम ओवर है। इस ओवर में अगर कासिम अकरम जो है उनसे इनको छुटकारा नहीं मिलता, ये पार्टनरशिप नहीं टूटती, तो फिर आगे चलकर इनके बॉलर्स की और आजमाइश होगी। उबैद शाह को एक ओवर करना है। शोएब मलिक ने आज बॉलिंग नहीं की, तो आज इनकी जो दिफाई बॉलिंग की सलाहियतें हैं वो इम्तिहान में आएंगी। और ये विकेट होनी चाहिए। शोएब मलिक आए नीचे और फिर से कमाल कैच लिया उन्होंने। इस बार खासी देर तक उन्हें अपने कंधे के ऊपर देखना पड़ा और एक बार फिर उन्होंने मिसाल कायम की। ये अच्छी शॉट नहीं थी उमर अमीन की जानिब से, आउटसाइड ऑफ स्टंप आगे गिरा हुआ गेंद था। एक्स्ट्रा कवर भी ये मारते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती इसको लेग साइड पे खींचने चले गए। उस्मान तारिक एक समझदार बॉलर हैं। पहले लेंथ भी डिफरेंट थी, लाइन थोड़ी बॉडी के करीब थी जिसकी वजह से स्लॉक कर पाए थे, लेकिन इस बार बहुत बाहर से फैच किया और इसका नुकसान उठाना पड़ेगा डॉल्फिन्स को भी। और उमर अमीन 5 रन में बना के वापस 5 खिलाड़ियों के नुकसान पे 133। अच्छे खिलाड़ी हैं मोहम्मद अखलाक, इस वक्त उनकी आमद हुई है और इनमें कोई हैरानी नहीं होगी अगर यहाँ से ही अपनी टीम को जितवा कर ले गए। गो के इनके पास ज़्यादा मोहलत कम है यहाँ सोच विचार करने की। इनके आने की वजह उमर अमीन का शॉट था, दोहराना चाहते थे। अभी 2 गेंदे पहले उनको बाउंड्री मिली थी मिड विकेट पर स्लॉग करते हुए, फिर से वही चाल उनको खासी महंगी पड़ी। अच्छी डिलीवरी, बिल्कुल भी रीड नहीं कर पाए, कट करने को तैयार थे अखलाक, बाल बाल बचे। एक और कामयाब ओवर उस्मान का। तो इस स्पेल में उन्होंने 2 खिलाड़ी आउट किए, 133 पर 4।
शर्जील खान टिप्स दे रहे हैं नौजवानों को पिछले कदम पर खेलने की। मोहम्मद अली अब ये वापस आए हैं, बिल्कुल रफ्तार पेश नहीं की कासिम अकरम को जो उठाकर खेलना चाहते थे। दोनों तरफ खेल सकते हैं कासिम अकरम। जिम्मेदारी ज़्यादा अब कासिम अकरम के ऊपर ही है क्योंकि वो सेटल्ड हैं। और ये देख लें वॉर्म्स नज़र आ रहा है कि एकदम जो डेविएशन है वो नीचे की तरफ जाना शुरू हो गई है एंग्रो डॉल्फिन्स की, और विकेट्स या के बाद गिरती जा रही हैं। और इसका क्रेडिट जाता है उस्मान तारिक को। काफ़ी मुश्किलात दी हैं तकरीबन हर तरह के बैटर को इन्होंने, और जानते हैं ये। क्या बात है। खेला कवर्स में एक और रन के लिए कासिम अकरम को एक बार फिर तेज गेंद नहीं की, क्योंकि पुल और कट दोनों के लिए तैयार रहते हैं। सेंट्रल पंजाब के दिनों से अच्छा खासा एक दूसरे को जानते हैं। ये उमर अमीन जो है गेंद को तो दायरे से भी नहीं बाहर पहुंचा सके। एक और अच्छा दिन इनके लिए साबित हुआ, इनकी अच्छी वापसी हुई। इस साल का आगाज़ जो है वो खुशियों से हुआ था ABL PSL में, और फिर जल्दी ही इनके लिए हालात बदल गए, लेकिन अच्छी वापसी की है, फाइट किया है। बिल्कुल, और अक्सर हमने देखा कि विद टाइम मिस्ट्री स्पिनर्स जो हैं वो रीड होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन उस्मान तारिक सिर्फ एक चीज़ नहीं कि इनका पॉज ही जो है वो डिसीविंग है, बल्कि इनकी जो ग्रिप है, इनकी जो वेरिएशंस हैं, वो भी अभी तक पिक करना स्पेशली इस लेवल पे, इवन इंटरनेशनल लेवल पे भी मुश्किल है। इसलिए अभी तक काफ़ी इफ़ेक्टिव रहे हैं हर तरह की कंडीशंस में, और जो रोल उन्हें दिया जाता है जानते हैं कि विकेट्स लेना उनका मेन रोल है, और उसी माइंडसेट से भी जाते हैं। भाई देखना ये है कि ये पैंथर्स की जानिब से कौन स्पिनर्स मैदान में उतरते हैं। और यहाँ पर भी एक गेंद हाथ से निकलने के बाद स्पिन हुई, और एक बार फिर बिल्कुल भी रफ्तार पेश नहीं की। इस ओवर में बिल्कुल बालादस्त होने नहीं दिया कासिम अकरम को। ये बैक ऑफ द हैंड थी। अच्छी वेरिएशंस देखने को मिली हैं पिछले मैच में भी। अच्छा इफेक्टिव स्लोअर वन करते रहे, कटर्स करते रहे, इनटू द सरफेस मोहम्मद अली करते रहे, जिसकी वजह से मुश्किलात हुई हैं बैटर्स को। और कासिम दूसरे एंड से पार्टनर्स खोते जा रहे हैं, इसलिए डबल प्रेशर है उन पे कि सेटल्ड हैं, रन्स भी बनाने हैं, और थोड़ा सा इनको मिडल में रहना भी पड़ेगा। और ये वाइड, यहाँ पर 5 रन आ जाएंगे। ये बहुत ज़रूरी था यहाँ डॉल्फिन्स के लिए कि उनको ऐसा ब्रेक मिलता इस ओवर में, जहाँ पर पहली 4 गेंदों में सिर्फ 2 ही रन मैसर आए थे। इस बार ज़्यादा ज़ोर से गेंद करने चले गए। इससे पहले स्लो डिलीवरीज पर इन्हें था अली का। चेंज ऑफ पेस ज़रूर की थी, और जिस तरह के रिएक्शन मोहम्मद अली ने दिया है, ख़ुद बहुत नाखुश थे कि क्या डिलीवरी उन्होंने कर दी, क्योंकि एक्सपेक्ट किया जाता है। बहुत ही डाउन द लेग की थी फुल पेस के साथ। आइडिया बुरा नहीं था, लेकिन लाइन में बिल्कुल ही चूक गए। या कम से कम वाइट बॉल क्रिकेट में ये विकेट कीपर को इसका नुकसान नहीं होता। विकेट कीपर के हिस्से ख़राब नहीं होते बॉलर की इस गलती से। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अभी भी ये 22 के रन होते 4। अच्छी गेंद थी, और यहाँ विकेट आई। फुल लेंथ कासिम अकरम के पास कोई जवाब नहीं था इस पूरे ओवर में। उन्हें दबाव से 2-4 किया अली ने, और बहुत ही मुश्किल मौके पर वो टीम को छोड़े जा रहे हैं। तजर्बा नजर आया इस पूरे ओवर में मोहम्मद अली का, पेस वेरिएशन, लेंथ वेरिएशन, और इस बार शायद वो किया इन्होंने जो पिछले ओवर में करना चाह रहे थे। पिछले पांव पे खाया है कासिम ने,
बिल्कुल डिसीव हो गए थे इस मर्तबा भी. अच्छा इन स्विंगिंग बॉल कराया था और ये बड़ी विकेट है और इसके बाद मुश्किलात होंगी एंग्रो डॉल्फिन्स को. कासिम अकरम 27 बना के वापस 5 खिलाड़ी आउट 140 पे. कप्तान मोहम्मद इखलाक को अब ज्वाइन करेंगे मिडिल में. मुश्किलात का सामना है एंग्रो डॉल्फिन्स को. 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं 140 पे. वक्त बहुत कम है. फ़हीम अशरफ के पास टाइम नहीं है. अच्छी इनिंग्स खेली इन्होंने दूसरे दिन भी, लेकिन अब जो सिनेरियो है वो ये है कि रन रेट 12.24 पे जा चुका है और इनका करंट रन रेट 8.8 पे है. और बॉलिंग भी अच्छी होती नज़र आ रही है हमें एलाइड बैंक स्टैलियंस की जानिब से. अच्छा कमबैक किया. मोहम्मद अली बहुत ही शानदार बॉलिंग की है. तजर्बे की हम बात करते हैं. इस पूरे ओवर में नज़र आया कि एक प्लान था, कंट्रोल था, सिवाय वो एक वाइड के. भी लाइन में उन्होंने गलती कर दी, लेकिन जो डिलीवरीज की हैं उन्होंने, जो स्टॉक बॉल्स की हैं अपने वेरिएशंस के, वो काफ़ी अच्छे रहे. अच्छा ओवर. इस बार तेज गेंद किया, हार्ड लेंथ को हिट किया. कोई रूम नहीं दिया था फ़हीम को, लेकिन एक रन बनाने में कामयाब ज़रूर हो गए. अच्छा ओवर मोहम्मद अली की जानिब से. 16 ओवरों के अख्ताम पे 141 for 5. Worried Sarfraz Ahmed, the mentors for Engro Dolphins, because if they lose this one also, they'll have 4 losses out of 4. We don't want to be in that position as a mentor, as a team. But they must believe, because at the same stage, after 16 overs, Allied Bank Stallions were 138 for 3. They've lost a couple of more wickets than that, but the score as far is concerned, Dolphins are just ahead. As we see the change in bowling, the medium pace of Hussain Talat, 59 wickets at this level, 3 for 17 his best. 50 runs of 24 deliveries. Fahim Ashraf, Ikhlaq are on the crease. If you talk about talent, yes, you can tick that box. They have the talent to do it. Do they have the form? Cuts well, but there is protection. Very smart field setting also, as I welcome alongside me the former captain Salman Butt. Good position this for Allied Bank Stallions. They've taken the important wickets, and now they have 2 new freshmen at the crease. And this is how Kasim Akram went, going across the line, and straightforward decision there for the umpire. Muhammad Ali taking the very prized wicket of Kasim Akram, who was betting and going great guns with it. And this field setting that Ali you just spoke about is an excellent field setting, especially if you're going to bowl slow ones, mix them up outside the off stump. As a batter, we'll come back to it. Once again, slower ball, and this time swatted away in the gap, and the fielder does well, dives, and only 2 allowed. It's young Shamil. He's done well. He's there for Taimur, and now the keeping gloves have been taken over by the captain himself. Look at this fielding effort once again. Coming back to this fielding position,
to hit that slower ball in this particular set of fielders, you need brute power. There is no other way you can time a slower ball and hit a big stroke. So that is asking a lot from the batter at times. Clark has the power and the distance too. He's just powered this for 6. That's a brilliant hit by Clark. Yes, absolutely. We asked for it and he has delivered. And interesting thing would be to see whether Hussain Talat changed the pace. No, this was a pace on delivery and right in the slot. And this is what you cannot do. At this pace, Hussain Talat needs to be precise with line and length and very efficient with his changes. This is the way to go. Another slow one. And Clark just puts it away for 1. 150 now up for Engro Dolphins. And a match which is well poised. Yeah, change in pace. Maybe Hussain Talat is looking to mix it up. Just don't be too predictable bowling those slower ones on every occasion. Bowl that seam up, quicker delivery at times, but the length, as you said, don't bowl them in the power zone up to the batters. Just don't bowl there, even if you're looking to bowl that quicker one. For Fahim Ashraf, the field changes. There's a deep point, deep cover in place. As he tries to heave it across, no timing. They'll take 1 for that. Yes, another change of pace and another shot without timing. In this Barrier Town Champions Cup, and here comes Barrier Town. And their new project, they go global, and they look to build a gated community in Dubai South, a world-class one. So good luck to them. Well done, Salman Butt. It's Champions Cup T20. We're just heating up in this tournament, halfway there. 40 runs required of 20 deliveries. Hussain Talat steaming in. Slower one, picked up, it's in the air. Fielder coming under. Mohsin makes no mistake. He's a very safe fielder in that region. Gets rid of the very dangerous Akhlaq. Celebrations says it all. Yes, Mohsin was underneath it and he reached well before in time. The ball came down and it was a safe take in the end. And Mohsin is having a great game. Another slow one, yielding 1 wicket. So it's 152 for 5 now. Change in pace again, working for the Stallions. This is a big wicket as far as this game is concerned, because Akhlaq, we know, he's a bit of a 6-hitter. Gone for 10. It's 152 for 6. There's another trouble for the Engro Dolphins. They've got a long tail. You see Samin Gul playing at number 8. Usually we see an all-round cricketer come at that position. But Samin Gul, known for his bowling abilities. He has a job to do. Just stay there, out there with the captain. Look to give the strike to Fahim Ashraf mostly. And the number says doesn't have much talent as a batter. The 63 runs in 54 games. Fahim is the key player now in this situation. It will be him who will have to dominate, as this one is just a single and 17 overs completed. Dolphins 152 for 6.
38 runs required of 17 deliveries. As Salman said, all eyes would be on Fahim Ashraf. But can Samin Gul stay there with him? That's the question, because they don't have much batting to come. Long tail for Dolphins. Yes, indeed it is. If you have Samin Gul batting over here and it's 6 down, so that means the rest to come will be predominantly bowlers who can have a swing. But it's Samin Gul who can actually be good with the bat as well. So it's the 18th over and Ali running in. And this is close and straight and given. Wonderful bowling this. Straight in the stumps. You miss, I hit. And that is exactly what happened. He hit the pad in front of the stumps. And umpire has no hesitation as the 7th wicket will fall for the Engro Dolphins and all their efforts are falling apart. Yeah, now you see why those numbers are the way they are, because Samin Gul has not a good technique facing that straight deliveries, came across, wanted to play across. That's not how you play a fuller delivery. Credit to Muhammad Ali for some exceptional bowling at the day. Gone on the very first delivery. It's 153 for 7 now. Right, Ramiz Jr., the new batter in. What can he do? Because it's not easy. Muhammad Ali is bowling straight, bowling quick. This is rather well played. Placed towards mid-off for a single. And this is the way Clark went. Another slow one. And a safe pair of hands by Muhammad Mohsin. And then Muhammad Ali darting one into the stumps. And it was full and straight. And no doubt about that. In trouble, Engro Dolphins. Fahim is their last hope. And they require 37 of 15. So they need him to play a blinder. And this is what all of this dugout would be hoping for. Yeah, they've tried different things, different combinations, Engro Dolphins. But having Samin Gul at number 8, I think that's another area of concern for them. Normally we see Salman, an all-rounder, coming at that place who can bat or use the long handle. I mean, if you really go deep down and have a look at what the Dolphins have been opting for, is changes every game. So you can't be that frequent with changes and then hope that the results go your way. So it's an absolute a search going on of an ideal combination, and in the process they are not winning any games, and that is a concern for their sports staff and for their mentor. It must be, obviously they're putting in their efforts, but nothing is seeming to work. Yep. It's too good for Ramiz Jr., Muhammad Ali. There's a direct hit. They're not appealing for that, so everything is fine. I'm gonna ask you this, Salman. Engro Dolphins, what can they do? What can be the best combination for them? Yes, it's not working. They brought in an X factor in form of Ehsanullah. Didn't work. They brought back Huraira. Didn't work. They've lowered down the number of Muhammad Akhlaq. Didn't work. What can work? I think they haven't been bowling well, particularly bowling to the batters at the areas of their strength. If you remember yesterday, Khushdil Shah smashing everything on the leg side. They were feeding him that line and length. And even today, Salman and Shad missing targets. Because Ramiz did a good job in between. He picked up crucial wickets. But then that partnership, last 10 overs, was no wicket. Unless the last ball was a run out. And this is a chance for the square leg fielder who comes in and isn't able to take the catch.
The fielder Yasir covers up. It was a good try, and young Shamil was unable to complete the catch. 18 overs gone, and Engro Dolphins are 158 for 7. This dugout is not a happy dugout. It can be a difficult place to be. One of the brightest days, with wind blowing and the flag flying, and the strength of the sun being different to the previous days, and the wicket responding well with lots of runs. This one is swatted down the ground, but whenever Hussain Talat has changed the pace, the batters haven't had a decent connection. So the key is to change the pace. It's just the one delivery that he bowled at pace went for a 6. It's now or never for Fahim Ashraf in this game. He has to go. It's 11 balls and 32 runs, as Mr. Osama Mir has a chat with his captain Shadab, and they'll be discussing what to do first in case they win the toss. This is flat and over the fielder. Power. And the batter Fahim Ashraf, he gets into the act. This is what is required, and this is what is expected from him. Absolutely. Fahim refuses to give up. Picked up the length beautifully. The area he chooses, that's where he likes it. Great swing of the bat too. Strong base, as you always say, is the key. Fahim Ashraf showing it to us. Yes, with the fielders, one at deep point, one at deep cover, he needs to be outside the off stump most of the time with this lack of pace. Now he decides to go with a quicker one, and the umpire, a little bit of exercise for him to raise the arms and give it a wide. Still 25 to get. It's not a impossible task for Fahim Ashraf. So he's got 10 deliveries. He'll have to face most of them. And you just never know. Just get it deep to the last over. Maybe 10, 12 in the last over. Fahim Ashraf facing. You just never know. Shoaib Malik making sure that everything is in place. Santhalat bowls. Strikes down the ground. Forcefully hit. And for 4. That is brilliant hitting by Fahim Ashraf. Once again, pace on in the slot and drill down the ground by Fahim Ashraf. Lots of power. And the long off had no chance. This is the way. If they can win this game, this will give them lots of confidence to win from such a position. And Fahim certainly is an individual who can do that. Very important, the next 3 balls from Hussain Talat. 21 required. It's a 6. It's up and over. It's huge into the crowd. And Hussain Talat bowling in the slot. Pitched up. It was a change of pace, but it pitched in the slot. And Fahim Ashraf, well, he was looking for that. As his teammates look on, and they hope that he is going to deliver the goods. He has so far. Yeah, he's being a one-man army. That's brutal hitting. Again, being too predictable with those slower ones.
That's the trouble you have when your field setting is like this. He's looking to bowl those slower ones, being very predictable. Fahim Ashraf ready for it. He's got the skill, he's got the talent, he's got the intent. There are worries in this camp now. 15 of 8 with Fahim Ashraf looking destructive at the moment. Would be interesting what Haris and Shoaib Malik now will plan. And square leg is up too, and that is one of the stronger areas of Fahim Ashraf. So only very precise slower deliveries are a way out for Hussain Talat. If he bowls in the slot, whether with pace off or pace on, in both cases Fahim is taken the better of him. Once again, this length outside the off stump, just missed. It was pace on delivery. Had he edged it, would have gone for 4. It's very lucky, I tell you, Sentalat. Any part of the bat would have taken this for a boundary because third is inside the circle. Shoaib Malik is a concerned man. Fahim Ashraf looks determined. Sentalat a bit of pressure because just 15 runs off 7 deliveries. A boundary here will certainly even things up for the Dolphins. Smacked hard straight to the fielder though. 1 run. Fahim Ashraf will take it. He will take the strike in the next over. 19 runs coming off this over. 19 gone. 177 for 7. Mr. Salman Butt. Stallions scored 12 runs in their last over. Dolphins need 14 runs of their last 6 deliveries. There is tension in this camp. Which side this game is going? At the moment, it all depends what Fahim Ashraf does, because he is the man who has brought them so far. 14 required of 6. Only 3 decent hits are going to do this. And he certainly has the capability. And it's young Ubaid Shah who bowled his last over quite a few overs back. So in this cool weather, sometimes it can be difficult to warm up straight away. So it's going to be a test for him. But he bowls well, gives nothing in terms of room to Fahim Ashraf, who went for a big one, didn't connect. Now it's important that dot balls can be bowled, and the fielders can come up and make sure that it is no easy single for this batter at the other end, which is Ramiz. But is it a good idea taking a single and giving the strike to Ramiz? He could have taken the strike for the 6 deliveries and took it on himself. Yes, absolutely. The way he was going, he would have been better off to take the match under his own control. And now, if Haris will be smart, which he is, he will call the fielders to cut in the single and not allow that one to him, and probably have a fielder or 2 extra in the circle, because this is their best chance. No, he doesn't. They still have 3. They need to bring 1 more in the circle. I don't know if the captain realizes. Now there's a fielder coming at extra cover. So they have 4 fielders inside now. But then there's a single everywhere. And this is something that you hardly understand. There can be an edge which goes to the third and gets the boundary. Yep. Is there a run out? This is a direct hit, and which can always be very surprising. Fahim seems disappointed standing at this end, and he feels that he's gone. And so does the excitement of the Stallions tell you. See, Fahim is certainly not happy from his partner because he was running straight into him. That's what he didn't like it. I think Fahim was well on his target to get to other end, but Ramiz went straight towards him. That is what the disappointment was about from Fahim Ashraf. Oh, that is
If he's out, that would be such an unfortunate time and the way to go. I think he's gone, yes. Yes, he's gone. That's a big, big wicket. Yep, bails are in the air and he is far away from the line. And Fahim, well, a dive could have possibly saved him, but he didn't take the option. And now he has to pay the price for the misunderstanding that happened between this run. Tail-enders, when they run, they seem to panic. And this is exactly what happened to Ramiz there. Fahim, after a very handy 25 of 12, after making the game interesting, he has to leave. Engro Dolphins, 8 down for 178. "34 runs for Salman Irshad. 13 runs to win. Can he produce some magic? He's hit that one high and handsome and out of the park. They are not giving up, I tell you. What a six that is. There's life back in the game as Salman Irshad smashes one over square leg. A shot which has cost batters their presence at the crease most of the time, and he hits it for a six. And not a great option. Wow. That is an instinctive reaction. His eyes were not on the ball. He just swung it hard, and the connection has been superb. Look at Fahim. He's in a dilemma whether to enjoy or what to say, because there's still 7 to get of 3 deliveries, as Ubaid Shah, showing his inexperience, opting to bowl a short of length delivery. Salman Irshad, he hasn't been bowling well, but he has a chance to redeem himself with the bat. What is the choice? Where he should be looking to bowl this delivery? Block holes. Block hole is the place to bowl. This is wonderful keeping. Great movement towards his left, Haris. That ball, I think it tailed back in definitely. Salman Irshad to see the first super over. Is 6 runs required. 1 hit can make it ultra exciting. Fahim Ashraf was furious. This is the reason why he was running. And look, Ramiz came straight towards him. He had to go around him for that extra bit. This is a tail-ender special. They always seem to panic under pressure situations. So it should have been the experienced Fahim to make a call. And that also should have been pre-decided, that who is going to call the run. 7 runs, 2 deliveries. Oh, his ball aim knocks him over. Exactly what Salman was referring to. Block hole, and that's what Ubaid did. Salman Irshad couldn't do much about it. Still 1 hit can get us to this magical super over. Let's keep hoping to make it more exciting and to bring back Engro Dolphins, who have fought their way, but at crucial times they've faltered. So close, yet so far. Salman Irshad walking back after scoring 6 runs, 184 for 9. Yeah, they've been treated with some fantastic cricket. The tournament needed a game like this, which has gone down to the last delivery. 7 runs required. Ihsanullah doesn't get the connection right. That's it. Stallions win.
Yes, jubilation for Stallions in the end. Ubadsha does the job, but he is down on the ground. I hope everything is fine with the young lad. He came well. He came back really well after being hit for that 6, bowling in the block hole. I hope everything is fine with him. He's a valuable asset for the Stallions. And it's a good win. A tight game. Engro Dolphins definitely improving from the previous game, but still not managing any points on the table. So concerns remain for their sports staff and the team. But Allied Bank Stallions, now they've won their 3rd game, and they did well in all aspects of the game. Talk about partnerships, talk about batters getting runs, the openers batting well, and then it was Hossain Tallat scoring and continuing his form. And along with him, Mohsin came in. He impressed everybody in the middle order, played a wonderful hand. And then it was Engro Dolphins' turn, where Saibzada Farhan played yet another good knock, but in the end he couldn't carry on, and so was Qasim Akram. He was brilliant, but didn't carry on to finish the game. Yeah, the only concern for ABL Stallions would be 54 runs came off the 5th bowler they used, 5th and 6th bowler, Hossain Tallat and Maad Sadakat. They bowled those 2 overs each and gave away 54 runs. All shake hands, all is good in the end. But yes, Engro Dolphins would be disappointed. They came so close, but yet so far. You can just tell by the expressions from the mentor, Sarfaraz Ahmed. He seems disappointed. They needed a win. They've now lost 4 games out of 4 they have played in this tournament. And that's how it happened. The very last delivery, they needed 7, and Ubadsha just too quick. Was in the block hole. Ehsanullah, not known for his batting abilities, couldn't do much. He was on the ground trying too hard. Sarfaraz Ahmed not happy at all, and rightly so. They worked so hard, came so close, made changes, just didn't work out in the end for them, as Allied Bank Stallions win the game by 5 runs. Engro Dolphins batting chart. Saibzada Farhan once again a decent knock, 59 of 38. Tahir Beg was in a hurry and he had to leave on a duck. Hurera came in, 24 runs, and then he got out. Qasim Akram at 37 of 24 was exciting, but didn't carry on. And Umar came in and he only got 5 of 8. Clark 10 of 7. This is where the match turned. And then Fahim, he showed some guts. He went after alone, scored 25 of 12, and then unfortunately for him, he was run out, and that was the end of the game and the chances for the Engro Dolphins. In the end, Ubadsha holding his nerve to bowl those wonderful Yorkers. Yeah, a couple each for Mehran, Muhammad Ali and Usman, but it was the worry was the 5th and the 6th bowler giving away 54 runs. Maad Sadakat and Hossain Tallat providing little expensive. Other than them, everyone has been very economical and into the wickets. Overall, as a bowling unit, they will be a happier side defending the total and getting the wickets. 20 overs and 185 for 9. As we go through the highlights, this is the first wicket. Tahir Beg wanted to go over square leg, only managed the top edge, safely taken by the keeper. And then there was a bit of a partnership when Hurera came in, and some luck went their way as well, along with few good strokes. Both of the batters hitting 6s and boundaries, and giving their team a good start in the power play. And then there were moments when they looked well set and good enough to carry on. Striking was getting better, and unless this happened, a shot where he wanted to just play towards the offside, only managing an edge to the keeper. Saibzada went on to score another 50, and Qasim came in and he played some expensive strokes. This was off the back foot, but couldn't clear. Good take by Muhammad Ali on the boundary, and Qasim Akram kept going with some lusty hitting and some well-timed strokes. And then Umar Amin came in, blasted one towards mid-wicket, and then I think he was in a hurry, and that cost him and his team. And it was a great take. Shoaib Malik once again. Then in the end, some crucial wickets taken by Muhammad Ali.
He was doing the basics right, bowling straight and full. On the other end, there were a few boundaries, but wickets kept falling at regular intervals. Clark not managing much, Mohsin safe hands, and in the end, Sameen Gul again another leg before to Muhammad Ali. Then came this over where things started to turn. Fahim Ashraf going after Hussain Talat, putting up a great show and giving the side a scare. And then this direct hit from Haris was a wonderful run out. And in the end, Ubaid Shah bowling in the block holes, doing the job for his side. Right, this is what happened. Engro Dolphins winning the toss, inviting Allied Bank Stallions to bat first. They scored 190 runs with a loss of 4 wickets. Hussain Talat top scoring with 57, with Mohsin also contributing with 55. Ramiz Unique got a couple of wickets, with Fahim getting 1. And in reply, Engro Dolphins came so close. 185 runs scored in their 20 overs for the loss of 9 wickets. Sabzada Farhan was rock solid for his 59. Usman, Mehran and Ali bowled beautifully, got 3 bowlers getting 2 wickets each, and the result going in the favour of Allied Bank Stallions, who won the game by 5 runs. Congratulations, Allied Bank Stallions, as they move right up the order at number 1 with 4 games. They've won 3 out of them and lost 1, and the net run rate 0.61. Number 2 is UMT Marcos, who will be in action next. Nurpur Lions not really behind. They're at 4 points. Lake City Panthers just 2 points, and Engro Dolphins, after playing 4 games, are winless without any point. Right, we have Marina Iqbal all set and ready for the presentation. Welcome to the post-match presentation of match number 9 between Engro Dolphins and Allied Bank Stallions. What a thriller of a game we just witnessed. Well, Engro Dolphins just falling short 5 runs, and you have to give credit to Allied Bank Stallions for their superb bowling effort. Moving on, firstly, let me introduce the presentation party for tonight. We've got Mr. Mubin, who is Bahria Town's Director, GM of Finance. Well, I'll request you to please step forward and present the player of the match to Mohammad Mohsin for his exceptional innings of 55 runs, taking just 32 balls, 4 fours and 4 sixes. He will receive the cash award of 25,000 and also player of the match trophy. Mohsin, आपसे बात करेंगे. पहले भी थोड़ी बात हुई, मज़ीद उसको एक्सटेंड करते हैं. एज अ प्लेयर अपने आप की यूटिलिटी कहाँ देखते हैं आप, एज अ प्योर बैटर या हिटर में कन्वर्ट करें? जी बिल्कुल, जैसे मैं एक बात करूँगा, शुएब भाई हैं हमारी टीम है, तो वो भी हमें काफ़ी अप्रिशिएट करते रहते हैं और हमें बताते रहते हैं कि आपने इस तरह करना है और हिटिंग में ये आपको ज़रूरत है. तो कल भी हम जो है, कल तो मैच था, उसके एक दिन पहले भी हमने इस प्रैक्टिस किया और काफ़ी फ़ायदा हुआ है. आपने बात की गाइडेंस की, और कितना आसान हो जाता है एज अ प्लेयर जब आपके साथ हुसैन तलत जैसे एक बैटर हो, वो आपको गाइड कर रहे हो, तो कितनी आसान हो जाती है बैटिंग? बिल्कुल, वो मोस्ट एक्सपीरियंस है, पाकिस्तान में खेला हुआ है इतनी सारी क्रिकेट, और मुझे उससे बात होती है और बताते रहे हैं कि आपने क्या करना है, इस वक्त क्या करना है, और हमने वही प्लान के साथ हम चलते रहे और कामयाबी मिली. और इस टूर्नामेंट का आपका पर्सनल गोल क्या है? बिल्कुल, मेरा पर्सनल गोल यही है कि मैं अपनी टीम को जितवाऊँ और भी ज़्यादा अच्छा करूँ. चलें, ऑल द बेस्ट एंड गुड लक फॉर द कमिंग मैच. थैंक यू. Now I would like to invite Fahim Ashraf, Engro Dolphins captain, to have a word with us. Fahim, hard luck, काफ़ी close पहुंच गए थे. थोड़ा सा पहले बॉलिंग की बात करें. डेथ बॉलिंग 52 रन्स दिए लास्ट 4 ओवर्स में, कंसर्निंग है? देखिए, ओवरऑल अगर बॉलिंग को देखा जाए ना डेथ में, तो वैसी बाउंड्री कंसीड नहीं की जैसे हमने पिछले मैच में की थी. इस मैच में मैं कहता हूँ कि वो उनके जो आखिरी के 2 बैट्समैन जो खेले हैं ना डेथ को, उन्होंने बड़ा अच्छा यूटिलाइज़ किया. उन्होंने जो रनिंग बिटवीन द विकेट किया ना, उसने फ़र्क डाला, क्योंकि एक बाउंड्री से अगर आप 12, 13, 14 ले रहे हैं ना, तो डेफिनेटली आप रनिंग अच्छी कर रहे हैं. तो मैं कहता हूँ कि वहाँ पे ये थोड़ा सा उन्होंने डिफरेंस जो है क्रिएट किया कि उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छी थी. कल भी आपसे बात हुई थी बैटिंग ऑर्डर की, आज मजीद नीचे थोड़ा आए, क्या इसको बेहतर किया जा सकता है अब द ऑर्डर आके? देखें जी, टीम की जो डिमांड है ना, उस हिसाब से हम कोशिश कर रहे हैं कि उस हिसाब से खेलें. आज भी देखें, आज भी हमने काफ़ी शफलिंग की है कि हम जो हमें रिक्वायर्ड है उस मुताबिक खेलें.
कोशिश ही कर रहे हैं, लेकिन जो मोमेंटम चाह रहे हैं हम लोग कि हमें मिले वो अभी मिल नहीं रहा, लेकिन फिर भी कोशिश है कि आइंदा वाले मैचेस में वो मोमेंटम हम करें. चलें, टाइम कम है. ऑल द बेस्ट टू यू एंड गुड लक फॉर द Thank you रिमेनिंग very much. मैचेस. I would like now to invite Mohammad Haris, the winning captain for Allied Bank Stallions. हारिस, क्लोज कॉल थी. थोड़ा सा पहले बात करते हैं कि बॉलिंग में नए बॉल के साथ थोड़ा सा फास्ट बॉलर्स पे कंसर्न है. वेल इतना कंसर्न नहीं है क्योंकि 2 ही फास्ट बॉलर हमने खिलाए थे. अनफॉर्चुनेटली इंजरीज चल रही है कैंप में, तो जमान और आमिर और ताहिर हुसैन अवेलेबल नहीं थे. तो अनफॉर्चुनेटली चूँकि बॉलर थे ही नहीं, 3 बॉलरों के साथ हम खेल रहे थे. आपने देखा होगा शोएब भाई भी को हैमस्ट्रिंग इंजरी थी, तो बॉलर थे ही नहीं है, तो उनका इतना कसूर नहीं है. अच्छा, बैटिंग की बात करें, एज अ कैप्टन अब देखने को आ रहा है हर मैच में कोई नया प्लेयर ऑफ द मैच बन रहा है. एज अ कैप्टन ये एक अच्छी हेडेक है. जी बिल्कुल, काफ़ी अच्छी हेडेक है और होना भी चाहिए. एज अ टीम जब आप काम करते हैं, ये गेम ही एज अ टीम की है, तो जितना सारे परफॉर्म करेंगे, सब थोड़ा थोड़ा डालेंगे, तो उतना ही फ़ायदा होगा टीम को. कोई एक और एरिया जो आप बेहतर करना चाह रहे होंगे क्योंकि अब सेकंड राउंड स्टार्ट होने लगा है? अगेन पावर प्ले, दोनों पावर प्ले हमें बेहतर खेलना पड़ेंगे, चाहे बैटिंग हो बॉलिंग हो. नए बॉल से हमें विकेट चाहिए. चलें, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट. you. Congratulations Thank once you. again. Well, that's it from the post-match presentation. Back to the comm box. Right, remember, this is a double-header game coming up next in the Barrier Town Champions Cup T20, match number 10. It would be Lake City Panthers taking on UMT Marcos. Live from Rawalpindi Cricket Stadium. Just don't go anywhere. We'll be right back in just about 15 minutes. With Gibbon and welcomed by Marge with the boundary. हाँ, आउट करार दे दिया गया और शानदार शॉट. एक और शॉट बेदर्दी के साथ खेला मोहसिन ने. Santalat slashes this one and it's in the gap. Man under the ball with the gloves is Taimur. Aerial and over the fence. Oh, he's drilled that one straight for 4. 50 for Sabzada Farhan. Back-to-back 50s. शोएब मलिक आए नीचे और फिर से कमाल कैच लिया उन्होंने. It's a 6. It's up and over. It's huge into the crowd. 7 runs, 2 deliveries. Oh, he's bowled him, knocks him over. Jubilation for Stallions in the end. Ubacha does the job. It's a good win.